on screen it is drugs used in bronchial asthma. Am I correct? You can just click on three dots which is at the bottom of your screen. आप एक बार वो तीन डॉट पे क्लिक करोगे, it will give you option of chat with everyone. So throughout the lecture, whatever questions, queries, doubts जो भी आपको आते हैं, आप chat box में type कर सकते हो. My constant is on the chat box. So if you have any queries, any questions which you wish to ask, anything जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, or if you feel I'm going fast, you want me to slow down, just type slow down the speed. Or if you feel I'm going too slow, you want me to increase my speed, let me know about that as well. I'll be more than happy to alter it. Just to get a quick idea, are we all from third year presently? क्या हम सब लोग अभी थर्ड ईयर B.pharm में हैं? Just a quick yes or no in the chat box. Yes or no? Are we in third year? So meaning that we're going to write GPAT 23, or is it that we are going to write GPAT 22 or GPAT 24? So we have few from second years and first year as well. In that case, don't worry. Somewhere I'll mix it in between. जहाँ पे भी concept higher side पे होगा, I'll mix it so that it becomes easy for you. Since the chapter is asthma, थोड़ा सा pharmacology का part है, थोड़ा सा medicinal chemistry का part है, and many of us probably might have not yet come across medicinal chemistry as a subject as well. Am I correct? जो GPAT 25 के रहोगे शायद ही अपने medicinal chemistry अभी तक सुना होगा. So don't think that if you don't understand this entirely, it was a bouncer or it was something which was out of the box for you. No, the only reason is that आपको college में अभी तक नहीं हुआ है. That's the reason you might feel it a bit new. But trust me on this. With regards to understanding, it won't make a difference whether it is already done in college or whether it is yet to happen in college. Am I clear? Are we good to go? Can I have a quick yes in the chat box? Just one yes in the chat box. Don't worry, I won't ask you to come to chat box again and again. Adi says yes. Kajal, Sarthi, Karishma, are we good to go? Isha, Sana, Ritesh, Anvita? Yes, no? No, no, no? Yes? Chalo. All good. So talking about drugs used in bronchial asthma, पहले मैं आपको एक basic fundamental चीज बताना चाहता हूँ. How many of you are aware about GPAT papers pattern? I hope हम सबको पता है कि GPAT में 125 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है. इन टोटल GPAT का पेपर जो 125 क्वेश्चन का होता है for 3 hours with 4 marks each is a total of 500 marks paper. आज तक GPAT में जो ऑल इंडिया रैंक 01 रहा है इन द पीरियड ऑफ लास्ट 3 to 4 years, जब से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA has started setting the question paper. Most of the time, All India rank 01 has played somewhere around at a score of 361 being the highest during AICT. And since NTA came into the picture, the highest score has been 359 for your information. If you want to get an idea about what was the cutoff of general category, OBC in detail, what are the good colleges for masters, what is the difference between MS, MTech and all, just सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ धर्मेश मेहता. वहाँ पे शॉर्ट छोटी छोटी चीजें बहुत डिस्क्रिप्टिव आती रहती है. एंड सेम यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल दिस माइनर टॉपिक्स इन आवर यूट्यूब चैनल अलॉन्ग विद आवर इंस्टाग्राम पेज एज वेल. यहाँ पे भी रील्स में आता रहता है. एनीवेज लेट्स कीप दैट असाइड. मेरे कहने का मतलब ये था कि तुमको टारगेट क्या करना है. इफ यू एंड मी आर टारगेटिंग GPAT ऑल इंडिया रैंक 01, जो शायद तुमको अभी शायद थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगता हो, तुमको लगता होगा कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज फार मोर इमेजिनरी कंपेयर टू व्हाट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल. ट्रस्ट मी ऑन दिस. वेरी सून, let me tell you, very soon, maybe within next 2-3 years, we will have a all India rank 01 of GPAT जिसको आउट ऑफ स्कोर आया होगा 500 आउट ऑफ 500. आज तक हाईएस्ट 359 रहा है इन द पीरियड ऑफ NTA एंड 361 वाज ड्यूरिंग AICT. तो अगर 359 को मैं हाईएस्ट स्कोर काउंट करता हूँ GPAT में, एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, तो अगर मैं 90 क्वेश्चन करेक्ट मार्क करता हूँ, कैन आई से 90 into 4 is 360, एंड इफ आई गेट अ स्कोर ऑफ 360 मार्क्स, कैन आई से देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग ऐसा होगा ही, but there is a high possibility that I might be all India rank 01. Does everyone agree with this? Isha, Aditya, Anakinna, Anjali, Preeti, does that make sense? Bhavna, Danishwari, Jeevan, Kashu? So yes, far more closer. This is actually practically possible if I get a score of 360 out of 500. And understand, पेपर में 125 क्वेश्चन है, तेरे को 125 में सिर्फ 90 करेक्ट चाहिए. तो आपका बेंचमार्क बेयर मिनिमम ऑफ करेक्ट आंसर शुड बी 90 क्वेश्चंस. आप 90 अटेम्प्ट करो या आप 100 अटेम्प्ट करो और वो 100 में से 90 करेक्ट जाए, तो भी इट वुड बी अ गुड स्कोर ऑफ 350 मार्क्स, क्लोज टू ऑल इंडिया रैंक 01, टॉप 10 में तो आप रहोगे. Why am I talking about this? Because when we are studying today a chapter of pharmacology, right, bronchial asthma, because we are talking about drugs for bronchial asthma, not only about asthma, we are talking about drugs for bronchial asthma.
सिर्फ अस्थमा की बात करता तो इट माइट हैव बीन अबाउट द डिजीज विच यू ऑल माइट हैव रेड समवेयर इन योर ह्यूमन एनाटॉमी पैथोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा था सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में एपीपी के टाइम, जिसको आप शायद एचएपी भी बोलते हो. यू माइट हैव रेड ओवर देयर अस्थमा कैसे होता था. एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज वो सेम अस्थमा जो एज अ डिजीज हम लोग ने सेमेस्टर 1 में पढ़ा था, राइट प्रथमेश, आदित्य, रितेश, ईशा, दिव्या, वो सेम अस्थमा का जो ट्रीटमेंट है, व्हाट आर द ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, दैट एक्चुअली कम्स अराउंड इन सेमेस्टर 3 टू सेमेस्टर 5, और उसका मेडिसिनल केमिस्ट्री समवेयर कम्स अराउंड सेमेस्टर 5 टू सेमेस्टर 7. That is why there is a gap. But understand, we are preparing for GPAT. We are not preparing for college lectures or college semesters or college internal exams. मग इथे आपल्याला very specifically we are supposed to focus upon what is it which can come from entrance point of view. समझने का ट्राई करो. जितना इम्पोर्टेंट ये पता होना है फॉर जीपैट, नाइपर, आईसीटी, बिट्स, मणिपाल, एंट्रेंस टेस्ट, दैट व्हाट इज सपोज टू बी रेड, क्या पढ़ना है वो पता होना जितना जरूरी है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी पता होना है कि क्या नहीं पढ़ना. यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट थिंग्स विच यू आर नॉट सपोज टू फोकस ऑन टू. आप वो टॉपिक या कोई चैप्टर पे इतना टाइम नहीं डाल सकते जहां से क्वेश्चन आने ही नहीं वाला है. तो यू आर सपोज टू बैलेंस योर टाइम इफेक्टिवली. तुम्हारे पास भी 24 घंटे, जो ऑल इंडिया रैंक 01 आएगा उसके पास भी 24 घंटे ही होंगे. जिसको ऑल इंडिया रैंक 01 आ रहा है उसने 125 के 125 मार्क नहीं किए आज तक, तो वो भी कुछ 90 या 95 ही करेक्ट मार्क कर रहा है, बट वो एरियाज पढ़ रहा है, वो चीज पे फोकस कर रहा है जहां से क्वेश्चंस आते हैं. हियर इज द डिफरेंस. एम आई वेरी मच क्लियर? भावना, अनिल, अंजलि, प्रीति, जीवन, ईशा, चेतना, गुड टू गो? So basically what we are going to do today with regards to asthma, we will come across 2-3 different areas wherein there will be a clear cut demarcation that yes, ये चीज को डिटेल में पढ़ना है. I must know in and out about this particular things. At the same time, there will be few instances, there will be few areas जहाँ पे मुझे पता है that I'm not supposed to invest my time over here. करेक्ट. तो मेक अ नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग कि कौन सी चीज पे फोकस करना है, इक्वली कौन सी चीज पे फोकस नहीं करना है. आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल. समवन इज फेसिंग वॉइस इश्यूज. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रीजॉइन प्रज्ञा. इज इट क्लियरली ऑडिबल टू रेस्ट? Is it clearly audible to others? Thanks, Isha, for confirmation. Others? All right, thanks. So yes, finally, let's get going. Before I move on to bronchial asthma, one of the major mistakes which we all of us make when it comes to preparation for asthma, समझने का ट्राई करो. अस्थमा हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है? विच ऑर्गन डज इट अफेक्ट? डज इट अफेक्ट ब्रेन? डज इट अफेक्ट ब्रेन? नो. आईज? नो. लंग्स? लंग्स, yes. My disease asthma specifically hits one and only one organ, which is lungs. अब आप जब कोई ड्रग यूज करना चाहते हो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, कैन आई से दोज ड्रग्स आर स्पेसिफिकली सपोज टू गो एंड एक्ट ऑन लंग्स ओनली? दोज ड्रग्स शुड नॉट गो टू एनी अदर ऑर्गन्स. डू यू अग्री? वो ड्रग अगर हार्ट पे चला गया, लिवर पे चला गया, ब्रेन पे चला गया, इज इट गोइंग टू एड अप टू थेरापेटिक इफेक्ट? थेरापेटिक इफेक्ट मतलब समथिंग विच इज गोइंग टू गिव मी अ बेनिफिशियल एक्शन. अगर ड्रग उसके टारगेट ऑर्गन पे ही नहीं पहुंचा, देन इज इट ऑफ एनी यूज? आई डोंट थिंक सो. इट्स अ बिग लॉस. करेक्ट कुंजल, कृतिका, कोमल, करिश्मा? आई होप यू ऑल अग्री. काशु? So we basically need to be very much clear that whatever drug I'm taking for treatment of asthma, my drug is specifically supposed to act on lungs. I'm asking you one simple question which you probably might have read in your semester 4, autonomic nervous system in pharmacology. नहीं भी पढ़ा है, so I'm laying a base for you over here. Matt, help me to understand, where do I find beta 1 receptors? Where do I find beta 2 receptors? Where do I find beta 3 receptors? I hope आप सबने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कॉलेज में सेमेस्टर 4 में पढ़ा होगा. अगर नहीं भी पढ़ा था, नो प्रॉब्लम. लेट मी पुट अप अ बेस फॉर यू ओवर हियर. राइट लवेश? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था कि 2 रिसेप्टर्स होते हैं. वन इज अल्फा रिसेप्टर, अनदर इज बीटा रिसेप्टर. When you classify beta receptors further, you have got beta 1, you have got beta 2, and you have got beta 3 receptors. When you classify alpha receptors further, you have got alpha 1 and alpha 2. Everything clear till here? यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया? No problem with regards to this. This is just the basic root. हमने ये पढ़ा है इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सेमेस्टर 4 ऑफ फार्माकोलॉजी. अगर कॉलेज में नहीं भी हुआ है, नो प्रॉब्लम. ये 2 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं. तो व्हेन इट कम्स टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो अल्फा 1 और अल्फा 2 में है, वेयर डू यू फाइंड अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर्स? कहाँ पे होता है? हैज़ इट गॉट समथिंग टू डू विथ योर ब्लड वेसल्स? करेक्ट?
Does everyone agree with this? Alpha 1, alpha 2 receptors nerve endings पे होते हैं. It is somewhere in that particular area, right? So most of the times your alpha 1, alpha 2 receptors play around blood vessels. ठीक है? BV लिख रहा हूँ, short form लिख रहा हूँ. Nothing for application for us over here. On the other side, when we talk about beta 1 receptors is specifically present in dhak. Yes, this is hard. I know you like the diagram. but ठीक है, दिल के ऊपर beta 1 receptor होता है. On the other side, when we talk about beta 2 receptors are specifically present on lungs. Oh my. मतलब जो मेरा टारगेट ऑर्गन है, in order to treat asthma, I am supposed to target lungs. In order to target lungs, can I say I am specifically supposed to target beta 2 receptors? Does everyone agree with this? Mohini, please rejoin. I guess it's an audio problem at your end. Am I clearly audible to others? Kunjal, Mehak, Meghna, Labesh, Krutika, Mohini, Namrata? Mohini, please rejoin. I'm sorry, others. So basically, if I talk about asthma, if I want to treat asthma, my target organ is lungs. लंग्स में भी मेरा टारगेट स्पेसिफिकली बीटा 2 रिसेप्टर पे रहेगा. मेरा ड्रग बीटा 2 रिसेप्टर पे जाके एक्ट होना चाहिए. ये मेरा स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन रहेगा. इज इट क्रिस्टल क्लियर? यहाँ तक सब ठीक है? अभी तक अस्थमा का चैप्टर चालू नहीं हुआ है. अस्थमा का चैप्टर समझने के पहले फॉर अस टू अंडरस्टैंड ड्रग्स यूज्ड इन अस्थमा, वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड मेरा ड्रग कहाँ पे जाके एक्ट होना चाहिए. इट इज नॉट अ हैफज़ार्ड ड्रग ना, बॉडी में किधर भी दे दिया एंड इट इज सपोज टू एक्ट एनीवेयर. लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ जॉइंट पेन. आपको जॉइंट पेन होता है तो आप आयोडेक्स कहाँ पे लगाते हो? वेयर डू यू अप्लाई आयोडेक्स? डू यू ईट आयोडेक्स? नो, यू अप्लाई आयोडेक्स राइट वेयर यू आर फेसिंग द जॉइंट पेन. नी पेन हो रहा है तो आप वहां पे आयोडेक्स लगाओगे. बैक पेन हो रहा है तो आप वहां पे आयोडेक्स लगाओगे. वी डोंट कंज्यूम ओरली आयोडेक्स. एम आई राइट? ऑन सेम ग्राउंड्स, अगर मुझे अस्थमा हुआ है, अगर मुझे ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, अगर मेरे लंग्स को इश्यू है, देन वेयर इज इट वेयर माय ड्रग इज सपोज टू गो? मेरा ड्रग कहाँ पे जाके काम करना चाहिए? व्हाट इज द टारगेट ऑर्गन फॉर माय ड्रग्स? परफेक्ट अन्विता. अगर प्रॉब्लम ब्रीदिंग के साथ है, अस्थमा हुआ है, राइट आदित्य, my target organ is lungs. My drug is supposed to go and act on lungs in order to give it therapeutic efficacy. Am I crystal clear till here? तो अभी हमको हमारा टारगेट ऑर्गन मिल गया. टारगेट ऑर्गन में हमारा स्पेसिफिक रिसेप्टर भी मिल गया, विच इज बीटा 2 रिसेप्टर. Lastly, talking about beta 3 receptor, beta 3 receptor is present in adipose tissue. You might have seen few drugs which are used for losing weight. पता है ऐसे टैबलेट्स आते हैं जिससे आप फैट लॉस कर सकते हो, एडिपोज टिश्यू लॉस कर सकते हो, वेट लॉस कर सकते हो. एंटी ओबेसिटी के लिए मेडिसिन आते हैं. तो दे स्पेसिफिकली एक्ट ऑन बीटा 3. अब ये अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 ये सब कुछ देख के आई गॉट वन क्लियरिफिकेशन दैट माय टारगेट इज ओनली एंड ओनली ऑन टू बीटा 2 रिसेप्टर. अभी आपको पता चल गया आपका ताला क्या है. नाउ यू गॉट एन आइडिया अबाउट योर रिसेप्टर वेयर यू आर सपोज टू एक्ट. Now you might be recollecting in your 12th standard you had a chapter chemistry in everyday life. Last chapter था 12th standard chemistry का, where we spoke about drug receptor interaction. जैसा रिसेप्टर का शेप होगा उस अकॉर्डिंगली ड्रग वहां पे जाके बैठेगा. समझ में आया? Am I correct? So whatever drugs we are going to talk about, which are going to be used in treatment of asthma, somewhere these all drugs are going to sit on the same receptor. Do you agree or you disagree? Do you agree or you disagree? Again, try and understand this. If my drug is acting on a receptor which is other than beta 2, if I take a drug for treating asthma, but वो बीटा 2 रिसेप्टर पे भी काम कर रहा है और बीटा 2 के साथ वो बीटा 1 पे भी काम कर रहा है, इज इट गोइंग टू बी हेल्पफुल और इज इट अ साइड इफेक्ट? इफ द ड्रग इज नॉट स्पेसिफिक इन इट्स थेरेपेटिक एक्शन, अगर वो बीटा 2 के साथ बीटा 1 पे भी काम कर रहा है तो वो हमारे लिए यूजफुल है और इज इट अ वेस्ट? Is it something which is advantageous to us or is it something which is going to cause a problem of side effect? Adverse drug effect होगा. It's a waste for us that वो बीटा 2 रिसेप्टर के साथ बीटा 1 पे भी काम कर रहा है. मेरे को बीटा 1 पे एक्टिविटी ही नहीं चाहिए. मान लो if on बीटा 2 it is causing dilation. Dilation मतलब क्या होता है? Let's understand this simple term कि dilation का मतलब क्या होता है. Dilation basically means that पहले आपका वेसल इतना बड़ा था, बीच में कुछ कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया ड्यू टू विच योर वेसल डायमीटर डिक्रीज. पहले इतना पूरा था वेसल का डायमीटर, अभी वेसल का डायमीटर इतना छोटा हो गया. अब आपका वेसल छोटा हो गया, राइट? देयर इज वैसो कंस्ट्रिक्शन. नाउ व्हेन अ स्पेसिफिक ड्रग विल एक्ट ऑन बीटा 2 रिसेप्टर, वो वैसो डायलेशन करेगा, वो किसी भी तरह से ये पाथवे को बड़ा करेगा. इट विल ब्रिंग इट टू इट्स ओरिजिन, सो दैट वैसो कंस्ट्रिक्टर के बदले जो अस्थमा में होता है विच इज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन,
वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ना हो, करेक्ट? दैट इज व्हाट यू विल डू व्हेन योर ड्रग इज गोइंग टू एक्ट इन अस्थमा. लेट मी टेक यू फर्स्ट टू द डिजीज अस्थमा की भाई अस्थमा होता कैसे. स्टेप बाय स्टेप लेट्स लुक आफ्टर हाउ अस्थमा इज बीइंग डन. अस्थमा का कॉजेटिव फैक्टर क्या है, देन वी विल टॉक अबाउट हाउ इट कैन बी ट्रीटेड. No need to read the statement, just focus on what is which I am writing in. First and foremost thing, asthma is basically a hypersensitivity reaction only. I can say it's a response given by your body to an external stimuli. You agree or you disagree? You might have heard about pollen grains in your school days. वो EVS में give reason आता था, pollen grains वाला, if you recollect, right? So many of us suffer from asthma due to pollen grains. तो कुछ भी ऐसा कंटामिनेंट, इन अदर वर्ड्स कुछ भी ऐसा अगर एलर्जन आता है, मेनी पीपल आर एलर्जिक टू सम मल्टीपल ड्रग्स, राइट? किसी को सल्फर कंटेनिंग ड्रग से एलर्जी होती है. तो व्हेन सच allergens which are moving in air just like your pollen grains, if they are being inhaled they can lead to asthma. So basically होता क्या है, first and foremost you have got a mast cell. Do you understand what do I mean by mast cell? आपने macrophages सुना होगा, neutrophils, eosinophils, you might have heard about all these cells. Same way there is something known as a mast cell. ये मास्ट सेल के ऊपर एंटीजन और एंटीबॉडी कंबाइन हो जाते हैं. रिमेंबर वन थिंग, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉज, अगर अभी हम जो पाथवे की बात कर रहे हैं, अगर आपको ये पूरा पाथवे समझ में आ गया, आई एम 1000% श्योर यू कैन फिनिश अस्थमा एंटायरली फॉर योर एंट्रेंस विद इन अ पीरियड ऑफ 1 आवर. 1 घंटे में आपका पूरा का पूरा अस्थमा हो सकता है. बट अगर आपको ये पाथवे जो हम अभी डिस्कस करने वाले, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस पाथवे, देन हाउ मच एवर टाइम यू रीड अबाउट अस्थमा, कितना 5 घंटा लगा लो या 25 घंटे लगा लो, अगर तुमने इसको स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा ना मेरे दोस्त, तुमको एंड तक इसका कुछ भी समझ में नहीं आएगा. सो आई डोंट वांट यू टू रटिफाई थिंग्स. लीव योर बुक्स असाइड, आई विल शेयर दिस प्रेजेंटेशन विद यू, आई विल शेयर दिस रिकॉर्डिंग विद यू. जहाँ पे जो स्पेसिफिकली लिखना होगा दैट आई लेट यू नो, जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन. तो फर्स्टली एंटीजन एंड एंटीबॉडी हैज कंबाइंड टुगेदर. ये दोनों मास्ट सेल के ऊपर कंबाइन हो गए. वंस एंटीजन एंटीबॉडी कंबाइन ऑन अ मास्ट सेल, दे कॉज ब्रेकडाउन ऑफ मास्ट सेल. साइंटिफिक लैंग्वेज में ब्रेकडाउन को बोला जाता है डीग्रैनुलेशन. तो अगर अभी कोई भी चीज ब्रेक हो रही है, जैसे यहाँ पे मास्ट सेल ब्रेक हो रहा है या मास्ट सेल का डीग्रैनुलेशन हो रहा है, वंस देयर इज डीग्रैनुलेशन ऑफ मास्ट सेल, सेल ब्रेकडाउन होगा तो वेरी ऑब्वियसली सेल के अंदर का कंटेंट बाहर आएगा. डज एवरीवन अग्री विद दिस? whatever chemical mediators might be in cell, let it be prostaglandins. I don't know how many of us have heard about prostaglandins, anatomy pathology. Prostaglandins हो, leukotrienes हो, histamines हो, platelet activating factors हो, ये सारी की सारी चीजें, ये सारे के सारे chemical mediators will get released. That's what is going to happen when you talk about a mast cell getting degranulated. अब ये सारे के सारे केमिकल मीडिएटर्स लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स, लुकोट्राइन्स, हिस्टामाइन्स एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, दिस ऑल आर एक्चुअली इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स. एक बार ये केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते, नेक्स्ट थिंग व्हाट दे कॉज इज इन्फ्लेमेशन. ये केमिकल मीडिएटर्स की वजह से ही इन्फ्लेमेशन होता है. वंस इन्फ्लेमेशन कम्स इनटू अकाउंट, इमेजिन आपका पहले ब्रोंकियाई इतना था. आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट एल्वियोलाई, ब्रोंक्यूल्स व्हिच इज अ पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो पहले आपके ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर इतना था. अब जब इन्फ्लेमेशन हुआ है तो आपका अंदर का जो डायमीटर था दैट हैज डिक्रीज, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से इतना पाथवे कम हो गया. So inflammation takes place, bronchoconstriction also happens. Once there is bronchoconstriction, you ultimately suffer from the disease which is known as asthma. Is it clear? अभी तक सब कुछ समझ में आया? एंटीजन एंटीबॉडी साथ में आए मास्ट सेल पे. जैसे ही वो लोग दोनों साथ में आए मास्ट सेल पे, मास्ट सेल का ब्रेकडाउन हुआ. मास्ट सेल का ब्रेकडाउन है, जैसे ही मास्ट सेल का डीग्रैनुलेशन होता है तो केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं. Once chemical mediators like prostaglandins, leukotrienes, histamine, platelet activating factors are released, the next thing which happens is inflammation takes place. Once inflammation takes place, the next thing what happens is it leads to bronchoconstriction and lastly asthma. ये physiology है कि अस्थमा हुआ कैसे. I'll repeat it in a simpler manner. पहले एंटीजन एंटीबॉडी साथ में आ गए मास्ट सेल पे. एक बार एंटीजन और एंटीबॉडी मास्ट सेल पे साथ में आ गए, बिकॉज ऑफ देयर इंटरैक्शन मास्ट सेल टूट जाता है, मास्ट सेल के टुकड़े हो जाते हैं, मास्ट सेल का ब्रेकडाउन होता है. एक बार मास्ट सेल का ब्रेकडाउन होगा, वंस एनी सेल ब्रेक्स, उसके सेल का कंटेंट बाहर आएगा. सेम वे यहाँ पे भी ये सेल का कंटेंट बाहर आएगा. मास्ट सेल के अंदर जो भी केमिकल मीडिएटर्स थे, लेट इट बी leukotrienes, let it be prostaglandins, let it be histamines, whatever was a part of our mast cell,
those all chemical mediators are released. Once all of these chemical mediators are released, because of these chemical mediators, have you read about non-steroidal anti-inflammatory drugs? It's again a part of your pharmacology. NSAIDs में भी same leukotrienes आते हैं, वहाँ पे भी same prostaglandins आते हैं, and it is because of this chemical mediators only that inflammation happens. Once inflammation happens, bronchoconstriction occurs. एक बार bronchoconstriction हो गया, ultimately it will lead to asthma. Am I crystal clear now? सब कुछ understood? Any bouncers, any yorkers, anyone wants me to still repeat it? If you want to get a better idea, the same thing has come across as a flowchart over here. You can just read through it. I'm holding it. सिर्फ पढ़ो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. मैं आपको recording, मैं आपको इसका slide दे दूंगा. I hope many of you are already aware that you are being added to the batch of demo lecture on Pharmaelite application. आपको online या offline message या notification भी आया होगा. Chemical mediators में you have prostaglandins, you have leukotrienes, you have platelet activating factors, you have got histamine and protease enzymes. You don't need to remember all these chemical mediators. कोई भी chemical mediators तुमको रटने नहीं बोलेगा, इसके सिवाय दूसरे भी chemical mediators होते हैं, but we are not going to be asked that what were the chemical mediators which were a part of your asthma as a disease. Is everything clear till here? अब ये तो वो हुआ कि अस्थमा क्यों हो रहा है. What is the causative factor with regards to asthma? We are not talking here about why occurring. We are here to discuss about how can we treat asthma. What are the different approaches for treatment of asthma? That is our point of discussion for today. Am I correct? Now help me to understand one simple thing. अगर एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन नहीं होगा तो क्या मास्ट सेल का ब्रेकडाउन होगा? हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दिस. अगर मैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होने देता हूं तो क्या मास्ट सेल टूटेगा? नहीं टूटेगा. अगर एंटीजन और एंटीबॉडी साथ में आए नहीं तो मास्ट सेल का ब्रेकडाउन नहीं होगा. मास्ट सेल का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो सेल के अंदर के केमिकल मीडिएटर्स भी बाहर नहीं आएंगे. करेक्ट अनिल, प्रथमेश, रोहन, राजपूत, प्रज्ञा, प्राजक्ता. अगर उसके केमिकल मीडिएटर्स बाहर नहीं आएंगे तो इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगा. अगर इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी नहीं होगा. अगर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो अस्थमा भी नहीं होगा. एम आई मेकिंग सेंस माय फ्रेंड्स? पूरा का पूरा फ्लो चार्ट अपने आप में एक क्लियर कट इंडिकेशन दैट हाउ इज इट सपोज टू बी डन. तो अगर मैं अप्रोचेस टू ट्रीटमेंट की बात करूं, कैन आई से प्रिवेंशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कैन एक्चुअली अवॉइड अस्थमा इटसेल्फ. मेकिंग सेंस? इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला once you understand this flow chart, doing its classification, doing its drugs is always going to be very easy. There is going to be zero challenge about it. Crystal clear till here? Can we go further, friends? अंजलि, प्रथमेश, प्राजक्ता, पूनम, पीयूष. तो एक हो गया एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टॉप कर दिया तो आगे के इवेंट्स नहीं होंगे. अगर मान लो एंटीजन एंटीबॉडी ऑलरेडी रिएक्ट हो गया, यू कैन नॉट स्टॉप दैट. बट इफ यू स्टेबलाइज मास्ट सेल, आप मास्ट सेल का ब्रेकडाउन नहीं होने दे रहे हो, यू स्टेबलाइज मास्ट सेल. तो इफ आई यूज अ मास्ट सेल स्टेबलाइजर जिसकी वजह से मास्ट सेल का ब्रेकडाउन ना हो, तो कैन आई से मास्ट सेल का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो केमिकल मीडिएटर्स रिलीज नहीं होंगे. करेक्ट? अगर केमिकल मीडिएटर्स रिलीज नहीं होंगे मेरे दोस्त तो इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगा. इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो सर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी नहीं होगा, तो सर अस्थमा भी नहीं होगा. आर वी मेकिंग सेंस? यस और नो? करेक्ट? नो बाउंसर्स, नो यॉर्कर्स, नो फुल टॉसेस. एवरीवनस क्रिस्टल क्लियर? कुछ भी रटना नहीं है अपने को बॉस. एट द सेम टाइम मान लो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन ऑलरेडी आ चुका था, आपका एंटीबॉडी ऑलरेडी आ चुका था, बट इफ यू वांट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रिएक्टिंग विद एंटीजन, तो अगर आप इम्यूनोग्लोबुलिन को न्यूट्रलाइज कर देते हो तो भी आपका काम हो जाएगा. अगर एंटीजन एंटीबॉडी ने रिएक्ट ही नहीं किया, देन देयर इज नो चांस दैट इट इज गोइंग टू कॉज अ प्रॉब्लम. एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? हेलो, समझ में आ रहा है? यस और नो? नाउ लेट्स कंसीडर अ सिचुएशन वेयर मास्ट सेल का ब्रेकडाउन भी हो चुका है और केमिकल मीडिएटर्स भी रिलीज हो गए. इफ यू वांट टू प्रिवेंट द फर्दर इवेंट्स, जो भी केमिकल मीडिएटर्स के बाद के इवेंट्स अगर आप उसको बताना चाहते हो, यू वांट टू स्टॉप दैट फ्रॉम हैपनिंग, व्हाट विल यू डू? केमिकल मीडिएटर्स में क्या क्या रिलीज हुआ था? देयर वाज leukotrienes, there was histamine, there was platelet activating factors, protease enzyme. if I use a antagonist, अगर मैं एक leukotriene antagonist यूज करता हूँ तो can I basically arrive onto a situation whereby my leukotrienes won't cause inflammation? Am I making sense?
if I use a leukotriene antagonist, can I expect that my chemical mediator won't lead to inflammation? If I use an antihistamine agent, my chemical mediator won't cause inflammation. My platelet activating factors won't cause inflammation. तो सबका एक एक antagonist लगा दो. Moment you have an antagonist for each of them, very obviously you won't suffer from inflammation, you won't suffer from bronchoconstriction, and ultimately you won't suffer from asthma. I hope we are making sense. Everyone is clear till here? Any doubts till here? Any questions in your minds? Public. Hello. Okay. हम कहाँ रंगों सा. No. Get back. Get back. All right. So this was all about a brief idea about classification. Help me to understand one thing. You said the second last step before bronchoconstriction was inflammation. Am I correct? भगवान ना करे आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ हो. But have you suffered from COVID? कोविड के टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? What was the biggest problem during COVID? The biggest problem in the treatment of COVID or the kind of disease it was inflammation in lungs. I don't know how many of you are aware about that. Inflammation of lungs के वजह से breathing में problem होती थी. अब वो inflammatory कितना है, how much inflammation has taken place, how do you identify that? In order to identify how much amount of inflammation has taken place, you need to utilize interleukin 6. आपको इंटरल्यूकिन 6 के बेसिस पे आइडिया मिलता है कि भाई अंदर इन्फ्लेमेशन कितना है. Am I clear till you? Tidal volume is another indication, of course. So interleukin 6 is a specific marker which is being used to identify what is the amount of inflammation. Nothing to do with asthma as of now, but as a determining factor for COVID. अभी जब inflammation हुआ है, you might have heard about methylprednisolone. पढ़ा था? Methylprednisolone is used in treatment of COVID. पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? Especially it was being used in North. I mean Delhi side and all, methylprednisolone, then steroids like dexamethasone. Methylprednisolone and dexamethasone were the two widely used steroids in treatment of COVID. Now that was only and only for one thing. आपको bronchoconstriction क्यों हुआ था बताओ? What was the reason of bronchoconstriction? Bronchoconstriction होने का reason was inflammation. Am I correct? Am I correct? अगर मैं inflammation नहीं होने देता तो bronchoconstriction नहीं होता, और अगर bronchoconstriction नहीं होता तो पेशेंट को अस्थमा नहीं होता. Do you agree with this? अगर मैं इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन नहीं होता, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन नहीं होता तो पेशेंट को अस्थमा नहीं होता. So what you are basically doing in order to treat asthma is you use steroids. Now this steroids basically suppress inflammation. Steroids का काम यही होता है कि वो immune system को suppress कर देता है. Inflammation कब होता है? When is it that you get any inflammation? Swelling कब आता है बताओ? Whenever there is any internal damage, when is there any tissue damage, whenever there is any internal injury, ये सब instances के time पे inflammation होता है. Am I correct? Am I correct? Same way, when your lungs are affected, it's that time that your lungs start having inflammation. And अगर वो time पे आप use कर लेते हो steroid, if you control the inflammation, then the patient can be saved. And that was what they were trying in COVID. But what happened? Problem कहाँ पे create हुआ? Have you heard about म्यूकोरमाइकोसिस? सुना है आप लोगों ने? अभी म्यूकोरमाइकोसिस में सिचुएशन क्या हो गया था? म्यूकोरमाइकोसिस कोई इतनी बड़ी डिजीज अपने आप में थी नहीं. एम्फोटेरिसिन बी और वो फंगल इन्फेक्शन गोइंग फ्रॉम nasal tract to ophthalmic to brain was never expected. And why it was being observed in COVID patient? Because patient में उन्होंने steroids इतना ज्यादा यूज कर लिया था कि बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना सप्रेस हो गया कि एक सिंपल फंगस ने पूरे बॉडी सिस्टम की, पूरे इम्यून सिस्टम की बैंड बजा दी. एंड इफ यू आर अवेयर, दिस म्यूकोरमाइकोसिस वाज मेजरली इन पेशेंट्स हु रिकवर्ड फ्रॉम कोविड. हर एक को नहीं हुआ. इवन आई वाज कोविड पॉजिटिव बट आई वाज नॉट गिवन अ स्टेरॉइड. मुझे स्टेरॉइड की जरूरत ही नहीं पड़ी. और जिन्होंने ज्यादा स्टेरॉइड ले लिया था, जिनका इम्यून सिस्टम लोअर साइड पे चला गया था, वहां पे म्यूकोरमाइकोसिस किल्ड देम. वो लोग कोविड से तो बच के आ गए, बट वो स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट के वजह से उनको म्यूकोरमाइकोसिस हुआ, व्हिच अल्टीमेटली लेड टू डेथ. एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर? एनी डाउट्स टिल हियर? हेलो. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं अकेला ही बोल रहा हूँ? व्हाई अदर्स आर नॉट टॉकिंग? समृद्धि, रोहन, साना, सनम, साक्षी, समीर. गोइंग फर्दर, अभी तक हम लोग ने जो भी क्लासिफिकेशन में बात किया, हम लोग अभी भी सिर्फ वही बात कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है. सो वी आर स्टिल ओवर हियर. ठीक है.
ऊपर के सारे पॉइंट्स हो गए. टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रिक्शन, यू सेड एट द एंड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है, राइट? तो अगर मैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन अवॉइड कर दूं, इफ आई कैन रिमूव दैट कंस्ट्रिक्शन, कैन आई से द पेशेंट वोंट सफर फ्रॉम अस्थमा? एम आई मेकिंग सेंस? If I treat bronchoconstriction, can I say the patient won't suffer from asthma? That's what you are talking about when you are saying that you would block the constriction neurotransmitter. जो भी केमिकल मीडिएटर्स ऐसे हैं जिसके वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, आप उसको ही ब्लॉक कर दो. अब वो कैसे होता है कैसे नहीं होता है, दैट व्हेन विल गो इनटू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक्स, दैट टाइम विल टॉक मोर इन डिटेल अबाउट दिस. गुड वन तेजस. एट द सेम टाइम यहाँ पे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुआ है, तो व्हाट इज इट विच यू वांट? यू वांट डायलेटरी एक्शन, राइट? वहां पे कंस्ट्रिक्शन हुआ है तो आपको डायलेशन चाहिए. एम आई करेक्ट? हेलो. So if I have a bronchodilator in place, can I say I'll still be able to solve the problem of asthma? Yes, I will be able to. Lastly, there are few drugs which are a directly acting bronchodilator. How many of you have suffered from cough and cold? खांसी तो सबको होती रहती है, सर्दी सबको होती रहती है. You feel your airways are blocked, right? Breathing में भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है, even in simple cold and cough. And the first thing which you do in that, you try and consume hot water. You try and consume haldi ka doodh, which is again hot. You try and consume a lot of coffee. तो कॉफी में कैफीन होता है, पता है ना आप लोगों को? एंड दैट कैफीन इज एक्चुअली अ ब्रोंकोडाइलेटर, उसके पास थेरेपेटिक एक्टिविटी भी है. And that's why once you consume that hot coffee, because of caffeine, you feel that okay, my airways have now got bronchodilated. That's how my airways are working. Clear till here? Everything is crystal clear till here. Any questions in your mind? अभी हम लोग चैप्टर का बेस रखने जा रहे हैं. अभी तक हम लोग सिर्फ चैप्टर का बैकग्राउंड देख रहे थे. बट इन लास्ट हाफ एन आवर वट एवर वी हैव सीन, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस एंटायरली, ट्रस्ट मी, यू आर डन विद ऑलमोस्ट द एंटायर चैप्टर. बट अगर लास्ट हाफ एन आवर में जो बात किया है अगर वो नहीं समझा है तो आगे चीजें काफी डिफिकल्ट हो जाएगी. आई डोंट वांट यू टू सफर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. क्लियर क्लियर? लेट्स गो टू द चैप्टर. व्हाट यू आर लुकिंग एट द लेफ्ट इज अ हेल्दी एयरवे पाथवे, एंड जो लेफ्ट के बदले राइट में है वो अस्थमैटिक पेशेंट है. कोई तुमको फिजियोलॉजी नहीं पूछने वाला है. आई जस्ट वांट यू टू ऑब्जर्व फ्यू थिंग्स ओवर हियर. कैन यू सी देयर इज सम अमाउंट ऑफ स्टिफनिंग जिसके वजह से एयरवेज कंस्ट्रिक्ट हो गए. दिख रहा है आप लोगों को? पेशेंट वाले में देखो, जहाँ पे अस्थमा लिखा हुआ है वहां पे देखो, देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ स्टिफनिंग. अभी स्टिफनिंग क्यों हो रहा है? हैव यू हर्ड अबाउट द प्रोटीन व्हिच इज कोलेजन? कोलेजन प्रोटीन के बारे में सुना होगा. कोलेजन जैसे ब्लड में होता है, बोन्स में होता है, वैसे कोलेजन वहां पे भी होता है. एंड कोलेजन वहां पे डिपॉजिट होके इट स्टार्ट्स हार्डनिंग दैट एरिया. इतना स्टिफ बन जाता है दैट अ सिंपल एयर पाथवे, अ सिंपल oxygen can also not pass through in and out. Same way, there are some other physiologies as well because of this vasoconstriction. Sorry, bronchoconstriction occurs in asthma. हमको कोई ये पूछने नहीं वाला है, हमारा फोकस यहाँ पे रहने वाला है. This is where our entire chapter is going to talk about. This is where we are going to deal about different drugs used in treatment of asthma. Help me to understand one simple thing. How many of you have seen GPAT 21's question paper? क्योंकि उसमें यहाँ पे से कुछ क्वेश्चन था. मैं वो क्वेश्चन आपको एज इट इज बताना चाहूंगा. आई वॉन्ट यू टू लिसन टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड आई एम 1000% श्योर, even if you have not read about asthma, even if you don't know what is the classification exactly, you still should be able to answer that. Do you want me to tell you the question? क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ आपको बोलने वाला हूँ. ध्यान से क्वेश्चन सुनना. लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली. once you think that yes, this is the answer, only then answer in. Don't be in a hurry. For your information, GPAT 21 में वो जो क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन का जो गिवन आंसर था, वो गिवन आंसर भी गलत था. someone already answered that in the chat box, but वो जो given answer था by NTA, that given answer itself was wrong. Then what was the correct answer? What was the exact question? One by one we'll talk about all of them. Can I start with the question? क्या मैं क्वेश्चन बोलूं? आर वी ऑल रेडी? अगर आपको क्वेश्चन लिखना है तो आप क्वेश्चन लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन स्क्रीन पे आने नहीं वाला है. आई समवेयर वांट यू टू मेमोराइज द क्वेश्चन, थिंक ऑन इट एंड देन आंसर इट. हियर वी गो. So the question goes this way.
चार ऑप्शन भी दूंगा, सो डोंट बी इन अ हरी एंड आंसर इट केयरफुली। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स दैट इज नॉट एब्जॉर्ब ओरली, मतलब इसमें से जो भी आंसर है वो ड्रग ओरली एब्जॉर्ब नहीं होता है। इट इज नॉट अ ब्रोंकोडाइलेटर, द क्वेश्चन इज सेइंग दैट द ड्रग इज नॉट अ ब्रोंकोडाइलेटर। ड्रग हैज गॉट नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन स्मूथ मसल, ड्रग डायरेक्टली स्मूथ मसल पे बाइंड भी नहीं होता है। एट द सेम टाइम इट इज स्टिल इफेक्टिव इन एंटीजन इंड्यूस्ड, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड, इरिटेंट इंड्यूस्ड अस्थमा, मतलब अस्थमा अगर कोई एंटीजन की वजह से हुआ है भी वो ड्रग काम का है, अगर अस्थमा एक्सरसाइज की वजह से हुआ है तो भी काम का है, अगर कोई इरिटेंट कोई पॉल्यूटेंट लाइक पोलन ग्रेन अगर उसके वजह से अस्थमा हुआ है तो भी वो पर्टिकुलर ड्रग काम का है। तो जो चार ऑप्शन में बोलने जा रहा हूँ उसमें से कौन सा ड्रग है विच इज बीइंग यूज्ड? वन ऑप्शन इज साल्ब्यूटामॉल, आई कैन राइट द ऑप्शन, इवन यू कैन राइट द ऑप्शन, मैं मार्क कर देता हूँ। एक ऑप्शन साल्ब्यूटामॉल था, दूसरा ऑप्शन टर्ब्यूटालिन था, तीसरा ऑप्शन मॉन्टेलुकास था, एंड फोर्थ ऑप्शन वाज सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। Do you want me to repeat the question? The four which I have highlighted are the options. Do you want me to repeat the question? एक बार वापस क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। एबीसीडी मत बोलो, जो चार आपके सामने हाईलाइट किए वही चार ऑप्शन थे, तो उसमें से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बता दो। आई रिपीट द क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स दैट इज नॉट एब्सॉर्ब्ड ओरली, मतलब ड्रग ओरली एब्सॉर्ब नहीं होता है, इज नॉट अ ब्रोंकोडाइलेटर, मतलब वो ब्रोंकोडाइलेटर नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। अभी ये चार ऑप्शन में से कितने ऑप्शन आपको ब्रोंकोडाइलेटर के अंदर दिख रहे हैं मेरे दोस्त? Out of the four options visible over here, there are two options which are right under bronchodilator. तो अगर आप क्लासिफिकेशन भी पढ़ के गए रहते ना जीपैट के लिए, पूरा इन डिटेल में नहीं, सिर्फ बेयर मिनिमम आप क्लासिफिकेशन भी पढ़ के गए रहते तो आपको पता होता कि ये चार में से दो ऑप्शन तो चले गए, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है इट इज नॉट अ ब्रोंकोडाइलेटर, वो ब्रोंकोडाइलेटर नहीं है। तो चार में से दो ऑप्शन तो उड़ गए। नाउ यू आर लेफ्ट विद टू ऑप्शन, वन ऑप्शन इज मोंटेलुकास्ट एंड अनदर ऑप्शन इज सोडियम क्रोमोग्लाइसेट। ये दूसरे दो ऑप्शन है जो बचे। Now try and understand this. GPAT वालों ने इसका आंसर दिया था मोंटेलुकास, बट करेक्ट आंसर था सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। कैन एनीवन जस्टिफाई हाउ? उसने बोला कि जो भी ड्रग है वो ब्रोंकोडाइलेटर नहीं है, वो ड्रग का स्मूथ मसल पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। बट एक बात बताओ, व्हेन डज लुकोट्राइन एंटागोनिस्ट कम इनटू द पिक्चर? लुकोट्राइन एंटागोनिस्ट का थेरेपेटिक एक्टिविटी तब मिलता है जब लुकोट्राइन्स रिलीज हुए रहते हैं, राइट? जब तक लुकोट्राइन्स रिलीज ही नहीं हुए तब तक लुकोट्राइन एंटागोनिस्ट का कुछ काम है क्या? बताए। leukotriene only leukotriene is available, and अगर मैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर यूज करता हूँ, इफ आई यूज सोडियम क्रोमोग्लाइसेट, तो मैं मेरे मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर दे रहा हूँ। अगर मास्ट सेल टूटा ही नहीं तो लुकोट्राइन बाहर ही नहीं आया, तो लुकोट्राइन एंटागोनिस्ट का कुछ जरूरत है क्या? इज देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ लुकोट्राइन एंटागोनिस्ट इन दैट पर्टिकुलर केस? यस और नो? आधे लोगों को क्वेश्चन ही नहीं समझा क्या? हाफ ऑफ अस couldn't identify the question. I hope we all are clear. इट्स अ सीक्वेंशियल इवेंट, जब तक मास्ट सेल टूटेगा नहीं तब तक लुकोट्राइन बाहर आएंगे नहीं, जब तक लुकोट्राइन बाहर आएंगे नहीं तब तक लुकोट्राइन एंटागोनिस्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं। समझ में आ गया? इज इट वेरी मच क्लियर नाउ? ये क्वेश्चन जीपैट 21 में था। So now we'll briefly talk about classification and we'll move to a specific drug and its activity parallelly. We'll continue till 7 with regards to this, and then I'll just quickly take you through a quick journey about how to go about preparation and everything about Pharmaelite at the end. Now let's understand from the titles itself. When I'm saying the drug is a bronchodilator, जो bronchodilator है drug, फिर वो बीटा टू सिम्पथोमाइमेटिक हो, आई कम टू इट व्हाट डू आई मीन बाय सिम्पथोमाइमेटिक, सब बात करेंगे। या वो मिथाइल ज़ैंथीन हो या वो एंटीकोलिनर्जिक हो। कैन आई से ऑल दिस ड्रग्स आर स्पेसिफिकली गोइंग टू कॉज जस्ट वन एंड वन थिंग? They are all going to dilate it, right? Right? Bronchodilator है, so they are all just going to dilate it. Once bronchodilation happens, अस्थमा नहीं होगा। ये तीनों का एंड में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही रहने वाला है कि ब्रोंकोडाइलेशन हुआ जिसके वजह से अस्थमा स्टॉप हो गया। क्लियर टिल हियर? Those who couldn't identify what I was trying to highlight with that, मैं एंड में वो क्वेश्चन वापस पेपर डाउनलोड कर लिया है मैंने, मैं आपको पेपर शेयर करके बताता हूँ कि एग्जैक्टली वो क्वेश्चन क्या था। So meanwhile, just wait. We'll discuss as it is with that paper itself, so that तुमको और better idea मिल जाए। ठीक है?
Can you proceed to next? वो question end में भी कर सकते. Don't worry, that question is not going anywhere away from us. That question is with us only. Can I go to next? Yes, no. Public. Talking about this classification entirely, ये classification काफी ज़्यादा important है. How is this classification going to play a role with regards to our exam is simply because straight forward question आएगा, कुछ भी घुमा के नहीं आने वाला है. If you know the classification, you can answer it. If we are supposed to buy this classification, the easiest way to do is add this diagram. This is an antigen, this is antibody Ig. अगर मैं antigen antibody reaction prevent करता हूँ with the help of omalizumab, can I say I can prevent asthma? Yes or no? If I prevent antigen antibody reaction, I can prevent asthma, right? Starting में मैंने वो hand written पूरा flow chart लिखा था red pencil से. If you are happening to recollect it, so on same grounds, if you prevent antigen antibody reaction by using anti-IgE antibody, immunoglobulins के against एक antibody use कर लो omalizumab. Once you have a anti-IgE antibody, asthma can be prevented. Are we making sense? Are we making sense how asthma can be prevented at that particular stage? यहाँ तक ठीक है? निशी, सनम, बिलारे. Nextly, एंटीजन एंटी, मैं एक बार वापस मैकेनिज्म बता देता हूँ, फिर ट्रीटमेंट की बात करते हैं. हमने बोला था एंटीजन एंटीबॉडी साथ में आते. एक बार एंटीजन एंटीबॉडी साथ में आते मास्ट सेल के ऊपर, उसके बाद मास्ट सेल टूटता है, मास्ट सेल का ब्रेकडाउन होता है, मास्ट सेल का डीग्लैरुलेशन होता है. मास्ट सेल का डीग्लैरुलेशन होता है तो मास्ट सेल के अंदर के कंटेंट्स बाहर आ जाते हैं, लूकोट्राइन्स बाहर आते हैं, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स बाहर आते हैं, हिस्टामाइन बाहर आता है. वंस दिस लूकोट्राइन्स, हिस्टामाइन्स, platelet activating factors comes outside, there is inflammation, and inflammation की वजह से bronchoconstriction, and bronchoconstriction की वजह से अस्थमा. करेक्ट, हमने यही पढ़ा था अभी थोड़े टाइम पहले हमारे स्लाइड शो पे, जहाँ पे हाथ से लिखा था मैंने सब कुछ. So if I prevent the mast cell from breaking down by using a mast cell stabilizer, point to be noted, there are three drugs which are a part of our classification of mast cell stabilizer, which is majorly clomoglycate, nedocromil, and ketoprofen. क्रोमोग्लाइसेट, नेडोक्रोमिल एंड कीटोटिफिन. अगर मैं तीनों ड्रग केटोटिफिन, क्रोमोग्लाइसेट और नेडोक्रोमिल यूज करता हूँ तो मैं मेरा मास्ट सेल स्टेबलाइज कर लूँ. उसकी वजह से मेरा मास्ट सेल टूटेगा नहीं. मास्ट सेल टूटेगा नहीं तो मीडिएटर्स बाहर आएंगे नहीं, मीडिएटर्स बाहर आएंगे नहीं तो इन्फ्लेमेशन नहीं, इन्फ्लेमेशन नहीं तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं तो अस्थमा नहीं. फ्लो ऑफ इवेंट क्लियर है? फ्लो ऑफ इवेंट क्लियर है माय फ्रेंड? बट इन अ सिचुएशन वेयर मास्ट सेल ऑलरेडी टूट चुका है, मुझे लेट पता चला, आई कैनॉट हेल्प इट, द मास्ट सेल हैज ऑलरेडी ब्रोकन डाउन. अब अगर मास्ट सेल ऑलरेडी टूट चुका है तो मास्ट सेल तो उसके केमिकल मीडिएटर रिलीज करेगा, तो उसने लूकोट्राइन रिलीज कर दिया. अब ये लूकोट्राइन की वजह से ही इन्फ्लेमेशन और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होने वाला है. बट इफ आई यूज अ लूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, अगर मैं लूकोट्राइन का एंटागोनिस्ट यूज करता हूँ, जाफिरलुकास एंड मोंटेलुकास, तो कैन आई से फिर तो लूकोट्राइन्स इन्फ्लेमेशन कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उसका एंटागोनिज्म हो गया. आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट द टर्म्स लाइक एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, सेमेस्टर 4 फार्माकोलॉजी में था. तो अगर मैं एक एंटागोनिस्ट यूज करता हूँ तो मेरे लूकोट्राइन्स एंटागोनाइज हो जाएंगे, तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और अस्थमा भी नहीं होगा. एम आई क्लियर टिल हियर? सब कुछ समझ में आ रहा है? नो बाउंसर्स, नो यॉर्कर्स, नो फुल टॉसेस. लास्टली, if we as a patient went to the doctor very late, starting में नहीं गए हम लोग, आराम से गए. In that particular case where we have gone very late to the patient doctor, and when you do blood test, you identify that already bronchoconstriction बहुत हो गया, आपको एक्सरे में दिख रहा है कि भाई there is a lot of bronchoconstriction already in place. तो अगर bronchoconstriction ज़्यादा हो गया रहेगा, then the only option you have is to use a bronchodilator. Am I correct? तो जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, ब्रोंकोडाइलेटर्स उनको डायलेट कर देंगे. Am I correct? Hello, 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 hello. I've shared one feedback form in the chat box. It's a request you fill in. The further demo lectures, whichever will be happening, will be notified to all those who register on this form. So ensure you register on this particular form so that next time there is a demo lecture, we can keep you informed. अगर वो लिंक मिस हो गया है आपसे तो मैंने ऑलरेडी वापस वो लिंक चैट बॉक्स में पुट अप किया है. डोंट मिस ऑन टू इट. आप फिल कर लो. मीनवाइल आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट. So if we talk about leukotriene receptor antagonists, bronchodilators, then these are the 3-4 major ways my anti-asthmatic drugs are going to work. Going back to our classification,
दिस वाज वेयर वी स्टार्टेड। एक एक करके सारे ड्रग्स के नाम बाहर करना इंपॉर्टेंट है, बट उतना ही इंपॉर्टेंट ये पता होना है कि मुझे ये सारे ड्रग्स बाहर नहीं भी किए ना तो चलेगा। मुझे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मिथाइल जैंथिन में थियोफाइलिन आता है, बाकी के ड्रग्स मैंने मिथाइल जैंथिन में नहीं भी बाहर किए, इट इज टोटली फाइन, आई डोंट नीड इट। Talking with the first one, beta 2 sympathomimetics. First and foremost, tell me why beta 2 only? Beta 1 नहीं, beta 3 नहीं, why beta 2 only? हमने स्टार्टिंग में देखा था कुछ तो, राइट? We saw something in beginning due to which we are saying that it is supposed to act perfect Advita. स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि बीटा 2 रिसेप्टर स्पेसिफिकली सिर्फ लंग्स पे होते हैं। मुझे अस्थमा हुआ है तो प्रॉब्लम लंग्स पे ही है, तो मेरा ड्रग स्पेसिफिकली बीटा 2 रिसेप्टर पे जाके ही बैठना चाहिए। आर वी क्रिस्टल क्लियर? एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस टिल हियर? Public, I hope it's very much clear. So when it comes to beta to sympathomimetic, we need to remember that Facebook was the best app at our childhood days. हमारे बचपन में सिर्फ फेसबुक था, इंस्टाग्राम नहीं था, टेलीग्राम नहीं था, स्नैपचैट नहीं था, ट्विटर था बट शायद पता नहीं था। वी वर मोर नोन अबाउट फेसबुक बीइंग द बेस्ट वन, राइट? FBS, so it's not FBS, it's majorly Facebook is best। तो ये फेसबुक बेस्ट, एफ बेस्ट में F stands for formoterol, B stands for बाम्ब्यूटेरॉल, तो एक है फॉर्मोटेरॉल, एक है बाम्ब्यूटेरॉल, एक है एफिड्रिन, एक है साल्ब्यूटामॉल एंड साल्मेटेरॉल, एंड लास्टली का जो लास्ट का टी है दैट इज टर्ब्यूटैलिन। क्लियर है यहाँ तक? एफ बेस का मतलब वन इज फॉर्मेटेरॉल, अनदर इज बाम्ब्यूटेरॉल, अनदर इज एफिड्रिन, एस से दो है साल्मेटेरॉल एंड साल्ब्यूटामॉल, एंड लास्टली टी से यू हैव गॉट टर्ब्यूटैलिन। इजी टू रिमेंबर, नाम याद रखना जरूरी। There are questions which are expected around this. We cannot let it go. पता होना आवश्यक है. It's important for us to understand that what are the probable questions on those grounds. Going to next category, specifically when we talk about our anti-asthmatic drugs, leukotriene antagonist. तो इसमें हमको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है. You can simply remember montelukast, zafirlukast. एंड में कास्ट है. कोई भी ड्रग में एंड में कास्ट आया, it is talking about leukotriene antagonist. Other way to do is leukotriene antagonist में L है, montelukast और zafirlukast दोनों में L है। क्लियर? क्लियर टिल हियर? सारे के सारे ड्रग्स नाम याद होना जरूरी है। टॉकिंग अबाउट द कैटेगरी ऑफ एंटीकोलिनर्जिक्स, यू हैव गॉट टिक टैक टो। टिक टैक खाता था बचपन में? इफ नॉट टिक टैक देन यू कैन रिमेंबर द वर्ड टिया। टिया नाम का कोई भी नहीं है, टेंशन मत लो। टी ओवर हियर स्टैंड्स फॉर टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, आई ओवर हियर स्टैंड्स फॉर इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, and C over here stands for anticholinergics. Clear till here? Tiotropium bromide, ipratropium bromide, and C over here stands for anticholinergics. Other way to remember it: T for tiotropium bromide, I for ipratropium bromide, A for anti का ये। तो या तो तुम C लो anticholinergics का, which I personally prefer more, or if you want to remember the other ways around, you can take up that as well. Going further to mast cell stabilizers, you know GlaxoSmithKline, GSK is a very big company. GSK का भाई है MSK. M stands for mast cell stabilizer, S for sodium chromoglycate, K for ketotifen. There was one more drug which we saw on the last slide. Can anyone help me to recollect the name of that? Narendra Modi SK, NMSK. Perfect. Nedochromil was there. नेडोक्रोमिल यहाँ पे था ना भाई, हमने पढ़ा था ना नेडोक्रोमिल, ये भी तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर ही है। Chromoglycate, ketotifen, same. So don't forget, even nedochromil is a part of this particular classification. So if you are referring to KD Tripathi, which is second edition or third edition, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स है जो वहाँ पे नहीं है बट यहाँ पे है। For your information, the largest selling brand in Indian market for treatment of asthma is combination of atophylline and theophylline. अब एटोफाइलिन तो हमारे सिलेबस में कहीं है ही नहीं, दिख रहा है क्या एटोफाइलिन? कैन यू फाइंड द वर्ड एटोफाइलिन समवेयर? नहीं है। But atophylline theophylline का combination is the largest selling brand in Indian domestic market. The brand name of the drug is Derifylin. Brand name वो tablet का है Derifylin. The brand is by Zydus Life Sciences. उसका नाम Zydus Life Sciences अब भी हुआ है. Earlier it was Cadila Healthcare. अभी एक दो महीने पहले ही they have changed their name to Zydus Life Sciences. I don't know how many of you are reading about the daily pharmaceutical industry.
Pharmaelite के ऐप पे एक डेली फार्मा न्यूज का भी बैच है and it is free. You can access pharma news which are of daily for free. Whatever things are happening around, you can get it right over there. Coming back over here, after your leukotriene antagonist and mast cell stabilizers along with bronchodilators, next you have steroids. अब ये सारे के सारे steroids का काम एक ही होने वाला है. How are they going to act? Can anyone help me to understand that? How are these steroids going to act? ये steroids कैसे काम करेंगे? शीतल, श्रुति, सिद्धेश. How are these steroids going to act? Can I say they are just going to suppress the immune system? एक बार immune system को suppress कर दो तो inflammation होगा ही नहीं. That's what their role basically is. They would straight away suppress immune system and get it through. I hope the classification is very much clear, and any question coming from classification, we will be able to answer it. Anyone wants to write anything? Anyone wants to capture anything, or can we move further? Anything to be asked? कि चले आगे. I think we are good to go. I hope you are not bored and you're getting an insight about what are the different possible questions parallelly. Copied, pasted. Rajpurit, big discussion. I'll try to highlight this at the end of our today's session surely. All right. Can we move to the first drug? Can we move to the first drug? So, talking about beta to sympathomimetic. पहले तो ये बीटा टू रिसेप्टर पे काम करने वाला है. अग्रीड. स्टार्टिंग में ही बात किया ना, इसका एक्शन बीटा टू पे ही होना चाहिए. बाकी किसी पे अगर इसका एक्शन आता है, then it is not useful. Am I correct? The action of this particular drug is supposed to be on beta 2 receptor specifically because that's the only receptor which is present in lungs. हम treatment की बात कर रहे हैं which is again at lungs. So if I want to treat asthma, I'm supposed to ensure that my drugs are acting on beta 2 receptor. So one is that it's going to act via beta 2 receptor. Second, what it is simply going to do is, if you remember your 12 ज़्यादा हो गया, semester 4 pharmacology अगर आपको start हुआ है तो आपने सेमेस्टर फार्माकोलॉजी में कुछ पढ़ा होगा लाइक साइक्लिक एएमपी. यू माइट हैव रेड अबाउट जैकस्टैट पाथवे. यू माइट हैव रेड अबाउट जीपीसीआर सिग्नलिंग. पढ़ा है सेमेस्टर 4 में. ये सारी की सारी चीजें को रिलेटेड है. दैट्स द रीजन इनिशियली आई आस्क्ड यू दैट व्हिच ईयर इट इज दैट यू आर इनटू विद रिगार्ड्स टू, सो दैट आई विल गेट एन आइडिया दैट तुमको बेसिक कितना ऑलरेडी हो चुका है. So when we talk about the basics which we had in our semester 4, वहाँ पे हमने cyclic AMP pathway, GPCR, JAK-STAT पढ़ा था. Basically, all our adrenergic drugs which are used in treatment of asthma, they will act on beta 2 receptor. Beta 2 receptor पर act करके वो लोग cyclic AMP के levels बढ़ा देते हैं. Moment your cyclic AMP levels increases, they straight away cause bronchodilation, and that's what we wanted, right? Moment my bronchial smooth muscles relax, bronchodilation happens, asthma can be treated. Does everyone agree with this? Mechanism of action clear हो गया. The pathway only cyclic AMP. Now if you go to KD Tripathi, इसके ऊपर एक बड़ा बड़ा सा पैराग्राफ रहेगा. अंडरस्टैंड. जीपैट में कोई भी तुमको फार्माकोलॉजी के लिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे एक पेज का शॉर्ट नोट लिखने नहीं बोलने वाला है. जीपैट में कोई भी आपको कोई भी ड्रग का स्ट्रक्चर बनाने नहीं बोलने वाला है. कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केटायन का एनायन पे अटैक, इंटरमीडिएट रिएक्शन या कोग्नोसी का मेथड ऑफ कल्टीवेशन लिखने नहीं बोलने वाला है. So when it comes to your GPAT preparation and your conventional semester preparation, they are two different things. It's a big request. Don't mix them together. तुम खुद के लिए problem create करोगे if you do so. Clear till here? Don't waste your time onto things and areas from where the questions are not going to pop up. That's the only smarter way to do it. So going further, I know this one-liner MY, one of the most important thing to be known, this beta to sympathomimetics cannot be given to patients who are taking antihypertensives. Why? Why? Can someone help me to understand why? Antihypertensive patient को क्यों नहीं दे सकते? Understand? Hypertension में क्या होता है? ये blood vessel है. आराम से पहले blood normally flow हो रहा था. जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर कब बढ़ता है? इमेजिन दैट दिस इज अ टैप. घर पे पानी का नल है, पानी का नल का पानी, हाँ, पानी के नल में से पानी आता है. मोमेंट यू क्लोज द डायमीटर ऑफ द ड्रग, मोमेंट यू क्लोज नैरो डाउन, तुम आधे साइड से फिंगर रख देते हो, बचपन में किया होगा आप लोगों ने. आप टैप के इधर नीचे से हाथ रख देते हो तो एकदम स्पीडीली वाटर स्टार्ट फ्लोइंग, राइट? द रेट एट विच द वाटर फ्लोज इंक्रीजेस. एम आई करेक्ट? जब भी कंस्ट्रक्शन होता है या जब भी उसका डायमीटर कम हो गया,
पहले आपका पाइप इतना बड़ा था डायमीटर में, अब अचानक से आपका पाइप छोटा हो गया, तो क्या ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? मोमेंट योर arteries or your blood vessels constrict, blood pressure will increase or will the blood pressure decrease? एक ही जन आंसर दे रहा है, बाकी लोग क्या सोच रहे हो? वेरी ऑब्वियस, अगर डायमीटर छोटा होगा मतलब उस पर प्रेशर बढ़ने वाला है, because now the same fluid is supposed to pass through a narrow zone. The moment your vessels constrict, your blood pressure is going to increase. अब अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, पेशेंट इज गोइंग टू टेक एंटी हाइपरटेंसिव, पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव लेगा तो उसका ब्लड प्रेशर कम होगा. तो अंडरस्टैंड दिस, इज ऑलरेडी ऑन टू एंटी हाइपरटेंसिव. एंटी हाइपरटेंसिव एक्ट ऑन विच रिसेप्टर? एंटी हाइपरटेंसिव कौन से रिसेप्टर पे काम करता है मेरे दोस्त? इज इट ऑन बीटा वन? परफेक्ट, अल्फा तो है ही, मेजरली अल्फा ही है, बट ऑल्सो सिंस योर ब्लड वेसल्स आर अ पार्ट ऑफ योर हार्ट, ब्लड प्रेशर इज समवेयर कोरिलेटेड टू हार्ट, और हार्ट में होता है बीटा वन रिसेप्टर्स. एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट टिल योर? I'm just trying to convey to you why antihypertensive या तो hypertensive patients को क्यों beta 2 sympathomimetic, sorry, they are not talking about beta 2 sympathomimetic over here, they are saying sympathomimetics needs to be administered with care. Now whatever drugs which are used in treatment, बहुत सारे ऐसे drugs है जो beta 2 के साथ beta 1 पे भी act करते हैं. Do you think this is advantageous? मैंने स्टार्टिंग में कोई तो एग्जांपल दिया था इसको लेके. वो ड्रग अगर बीटा 2 के साथ बीटा 1 पे भी काम कर रहा है तो काम का है कि वेस्ट है? If that drug is working along with beta 2 onto beta 1 receptor, is it useful or is it a waste? कोई बोल रहा है काम का है, someone is saying yes but waste. Understand this, if I am suffering from asthma, I want a drug which would act on beta 2, और वो जब बीटा 2 पे काम करे तो ब्रोंको डायलेशन करना चाहिए, राइट? दिस इज माय डिजायर्ड एक्शन. एम आई करेक्ट टिल हियर? एम आई करेक्ट टिल हियर? This is my desired action. Now, if I take a drug which is acting on beta 2, but it is also acting on beta 1, तू ऑलरेडी एक एंटी हाइपरटेंसिव ले रहा है जिसके वजह से तेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है. अब तूने कोई ऐसा ड्रग लिया जो बीटा 2 के साथ बीटा 1 पे भी एक्ट कर रहा है, डोंट यू थिंक वो ब्लड प्रेशर को और ज्यादा गिरा देगा? इट इज गोइंग टू कॉज मोर वैसोडाइलेशन, and when blood pressure falls below a specific range, rightly Muskan, you suffer from the problem of hypotension. So if you give to a hypertensive patient a non-selective drug जो बीटा 2 के साथ बीटा 1 पे भी एक्ट करेगा, it can lead to hypotension, blood pressure drastically गिर जाएगा. So that's what we had a word hypotension over here as well, जो indirectly था hyposensitization with regards to antigen antibody. And अगर हम specifically dilators के साथ बात करें sympathomimetic, तो hypotension एक classical problem है जो आगे भी हम एक दो ड्रग के साथ फेस करने वाले हैं. Everything clear till here? Why don't we give it to hypertensive patients? Second, ischemic heart diseases. जिसको भी ischemic heart disease होता है, what do you mean by ischemic heart disease? Point number one. Ischemic heart disease का मतलब क्या होता है? Quick. Try करो. Even if you go wrong, it's totally fine. But give it a try at least. What do you mean by ischemic heart disease? Ischemic heart disease basically means that जितना ऑक्सीजन चाहिए था उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है. There is less amount of oxygen supplied. Can I say यहाँ पे ऑक्सीजन supply is already a problem, तो blood pressure already लोअर साइड पे होगा, ब्लड फ्लो भी लोअर साइड पे होगा, बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड सप्लाई, राइट? तो अगर ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड फ्लो कम है, उसमें अगर आपने एक ऐसा ड्रग दे दिया जो बीटा 2 के साथ बीटा 1 पे भी काम करता है, डोंट यू थिंक वो बैंड बजा के जाएगा? डोंट यू थिंक इट विल कॉज इस्केमिक हार्ट डिजीज टू वर्सन फार मोर? दैट्स द रीजन यू डोंट गिव a non-selective drug with a patient suffering from ischemic heart disease. Lastly, when you talk about digitalis, digitalis अगर आपने फार्माकोलॉजी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है मेरे दोस्त? व्हाट डज इट डू? व्हाट डज द डिजॉक्सिन डू? डिजॉक्सिन क्या करता है? जब हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहता है तब डिजॉक्सिन काम करता है, या जब हार्ट रेट कम रहता है तब डिजॉक्सिन काम करता है? व्हेन इज द सिचुएशन दैट डिजॉक्सिन कम्स इनटू द पिक्चर? उसका रोल क्या है वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वो जब अंदर आता है तभी वो क्या करता है? डज इट इंक्रीज द हार्ट रेट? आ गया साइंटिफिक टर्म, आइनोट्रोपिक इफेक्ट, क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट. तुमने पढ़ा होगा हाइपर पोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड ऑल, करेक्ट? So somewhere this concept is correlated over there.
when CHF happens, when congestive heart failure comes into the account, and if the patient is being given digitalis, पहले तो congestive heart failure, what do you mean by congestive heart failure? congestive heart failure के टाइम पे सिचुएशन क्या होता है? भूल जाओ digitalis एंड ऑल, भूल जाओ. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में सिचुएशन क्या होता है? ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे होता है कि ब्लड प्रेशर हायर साइड पे होता है? पॉजिटिव नेगेटिव आइनो क्रोनो सब छोड़ दो, हमको साइंटिफिक टर्म्स में एज ऑफ नाउ बात नहीं करना है, ले मैन टर्म्स में बात करते हैं. अगर हार्ट फेलियर हुआ है तो कैन आई से द हार्ट रेट is basically in a zone of tachycardia. Do you agree with this? Heart is not pumping the blood. Heart rate is on the lower side. The blood pressure is on the lower side. I hope everyone agrees with this that congestive heart failure में heart rate lower side पे है. आपने डिजिटालिस दिया, डिजिटालिस का काम क्या है? हार्ट रेट बढ़ाएगा, राइट? कुछ तो वो कैल्शियम चैनल के साथ करता है, ड्यू टू विच इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर. एम आई करेक्ट? लेट्स नॉट गेट इनटू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. बेसिकली डिजिटालिस हार्ट रेट बढ़ाने वाला है. अब आपने एक ऐसा ड्रग दिया है जो हार्ट रेट बढ़ाने वाला है, एंड इफ यू एडमिनिस्टर इट अगेन विद सम नॉन सिलेक्टिव ड्रग जो बीटा 2 के साथ बीटा 1 पे भी एक्ट कर रहा है, डोंट यू थिंक एक तो मानबन डिजॉक्सिन विच इज बेसिकली डिजिटालिस वाज इंक्रीजिंग हार्ट रेट, इट वाज ट्रीटिंग द प्रॉब्लम, एंड उसमें आपने एक ऐसा ड्रग दे दिया जो हार्ट रेट वापस कम करने वाला है, देन इन दैट केस इज डिजिटालिस गोइंग टू मेक अ डिफरेंस? क्या वो खुद का थेरेपेटिक इफेक्ट दे पाएगा? एम आई टॉकिंग टू मच साइंटिफिक और व्हाट? लेमैन टर्म्स ही बोल रहा हूँ. परफेक्ट. एरिथमियाज वहीं पे आता है, एरिथमिया का पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है. सो बेसिकली योर डिजिटालिस व्हिच वाज इंक्रीजिंग हार्ट रेट, वो उसका एक्शन कर नहीं पाएगा क्योंकि आपने दूसरा ड्रग दे दिया जो हार्ट रेट कम कर रहा है. एम आई करेक्ट? तो एक साइड पे आप कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ट्रीट कर रहे थे, बट एक नॉन सिलेक्टिव ड्रग आपका बैंड बजा के जा रहा है. तो इज इट वेरी मच क्लियर दैट वी कैनॉट हैव अ नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर? हमको सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर ही चाहिए रहेगा, सिलेक्टिव बीटा 2 ब्लॉकर ही, जो लंग्स पे जाके ही काम करे. एम आई वेरी मच क्लियर? शानु, शीतल, श्वेता, श्रुति, साइनिया, सिद्धेश, तनिष्का, स्नेल, आर वी क्लियर? तेजश्री? अच्छा मैं तुमको एक डाउट पूछूं? कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? लेट्स से यू आर एग्जामिनिंग अस्थमा पेशेंट एंड यू आर द डॉक्टर. आप डॉक्टर हो, आप अस्थमैटिक पेशेंट का ब्लड रिपोर्ट चेक करो. सो आई एम फ्रेमिंग द क्वेश्चन नाउ, इट्स अ केस स्टडी. दिस इज हाउ क्वेश्चंस वुड टर्न अराउंड इन GPAT, NIPER, ICT, BITS, Manipal entrances. A patient suffering from asthma gets his blood test done. On this test, it was identified that leukotriene levels are on very higher side in blood. Which among the following drug will you administer? Will you give him salbutamol? Will you give him zafirlukast? Will you give him montelukast? Or you will give him both B and C? कौन सा ड्रग दोगे? अगर लूकोट्राइन लेवल्स ब्लड में ज्यादा है, ऐसा उसका ब्लड रिपोर्ट बता रहा है, तो आप लूकोट्राइन जो बढ़ गया है उसके लिए कौन सा ड्रग दोगे? विल यू गिव साल्ब्यूटामोल? क्लासिफिकेशन लिखा होगा बुक में, आई होप. और विल यू गिव जाफिलुकास्ट? और विल यू गिव मोंटेलुकास्ट? और विल यू गिव बोथ बी एंड सी? कैसे बात कर रहे हो यार तुम लोग? ना मुझे दिन में तारे दिखा दोगे दोस्त. क्या था ऑप्शन? एक ऑप्शन था साल्ब्यूटामोल, दूसरा ऑप्शन था मोंटेलुकास्ट, तीसरा ऑप्शन था जाफिलुकास्ट, एंड फोर्थ ऑप्शन वाज बोथ बी एंड सी. अभी समझने का ट्राई करो. तुम एक क्लासिकल सिचुएशन पे हो, एक क्लासिकल पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे हो, वेर वी आर टॉकिंग दैट पेशेंट के बॉडी में लुकोट्राइन के लेवल ज्यादा मिले. अगर ब्लड लेवल्स में लुकोट्राइन के लेवल ज्यादा है तो व्हाट इज इट विच आई नीड टू यूज? व्हाट इज इट आई व्हाट इज इट विच आई नीड टू यूज? आई नीड टू यूज अ लुकोट्राइन एंटागोनिस्ट. देन व्हाई आर वी टॉकिंग ऑफ यूजिंग साल्ब्यूटामोल? क्यों तुमने साल्ब्यूटामोल आंसर बोला? साल्ब्यूटामोल का फिर कुछ लेना देना ही नहीं था, हमको लुकोट्राइन एंटागोनिस्ट ही यूज करने थे फॉर ट्रीटमेंट. So answer in this particular situation should be both B and C. Am I correct? Am I correct? अगर मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता था ना, which among the following is a leukotriene antagonist, तो आप आंसर दे देते थे अभी both B and C. बट वही मैंने चीज केस स्टडी बना के पूछी, then we could not answer that. And GPAT NIPER is all going to be about application. It's not going to be about theory. पढ़ने से स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ नहीं होने वाला है. वो पढ़ने का जब तक अप्लाई करना अपने को नहीं आएगा ना बॉस, इट कैन कॉज बिग डेंजर पैरेलली. एम आई क्लियर टिल योर? एनी क्वेरीज? कैन यू प्रोसीड फर्दर? एक ड्रग कर लेते हैं, देन आई आस्क यू मोर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस व्हिच विल गिव अस एन आइडिया दैट हाउ मेनी सिचुएशन we will be able to get through. Let's move to the first drug.
विच इज बेसिकली सैल्ब्यूटामॉल। अब सब लोग बोलते हैं 300-400 ड्रग्स है फार्माकोलॉजी में, तो सारे के सारे ड्रग्स का हम लोग आईयूपीएसी बाय ऐड कर लेंगे, है ना? दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। हम 400-500 ड्रग्स का पूरा आईयूपीएसी बाय ऐड कर लेंगे। हेल्प मी टू अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू बाय आईयूपीएसी ऑफ 300 to 400 ड्रग्स? प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, हाइपोथेटिकली तो बहुत कुछ हो सकता है, लेट्स नॉट टॉक हाइपोथेटिकली। आई एम सेइंग प्रैक्टिकली, क्या तुम 300-500 चलो रट भी लिया, आईयूपीएससी रट भी लिया, तो भी क्या वो रिकलेक्ट होगा इजीली? डू यू थिंक इट्स गोइंग टू बी दैट इजी टू रिमेंबर? नॉट एट ऑल। So how is it that we are going to do it, or how is it that we are going to find a way? So basically, when it comes to this 300 to 400 drugs, we are just supposed to identify what is it which is going to stay in as a common moiety, जो वो drug में हमेशा रहने वाला है. Other than that particular common moiety, what is it which is a different part in that particular drug, which is only with that drug? जैसे मैं अगर आपको आगे लेके जाके बात करूँ, just a quick overview, if we talk about methyl xanthines, ये methyl xanthines के तीनों स्ट्रक्चर देखो, ये तीनों के तीनों ड्रग्स के स्ट्रक्चर के अंदर देयर इज दिस सिमिलैरिटी, मिल रहा है? मिल गया? दिस इज सेम, a purine ring with substitution of methyl groups at some position is same. It is throughout in each and every individual drug. तो अगर मेरे को इसका एक कॉमन आईयूपीए से मिल जाता है, आई जस्ट नीड टू रिमेम्बर द डिफरेंस, कहाँ पे मिथाइल ग्रुप 1,3 पोजीशन पे था, दिस इज पोजीशन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज गोइंग टू बी 4, 5, 6, 7, जो भी नंबरिंग है। तो कहीं पे मेरे को पोजीशनिंग में सिर्फ 1 और 3rd पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, कहीं पे 3 और 7 पे, सो दिस वाज 3rd एंड दिस वाज 7th, कहीं पे 1, 3 और 7 तीनों पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप्स है। एवरीथिंग क्लियर टिल हियर? एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, एनीथिंग यू विश टू आस्क? कुछ भी पूछना चाहते हो कि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है? Can we go back? So what I'm trying to tell you is, you should know the skeleton, which is going to be a common part of every drug. After knowing the skeleton, you should know that what is it which is a different substitution altogether. If you want to get an idea about how are you supposed to study SAR, or how are you supposed to study in detail about all the different drugs, their IUPAC, their way of reading when it comes to synthesis, their way of doing things with regards to starting material for synthesis, because again in GPAT no one is going to ask you to write entire synthesis. Question straightforward आएगा, starting material for synthesis of theophylline is. So what you as a student need to know is only that synthesis to be होने वाला है for theophylline, उसका starting material क्या है. So just if you want a brief description about how to do it, I'm just taking you to one different Chrome tab. Don't worry, शायद आपसे tab चला गया होगा. Just go to YouTube. After going on YouTube, just quickly you can type tips and tricks for GPAT, and just go to this first channel, tips and tricks for GPAT preparation. Just look at this entire video. यहाँ पे हम लोग ने in detail बात किया है that how are you supposed to do SAR, how are you supposed to do IUPAC, how are you supposed to deal with all the drugs and their classification altogether. अगर आपका pharmacology already strong है, आपको चीजें बहुत अच्छी. So yes, you can go through it anytime. ये video YouTube पे already available है. And most importantly, be careful that you check with regards to the entire zone. We have spoken about IUPAC of different drugs. We have spoken about organic chemistry. We have spoken about drug-drug interaction. We have spoken about how to reach pharmacology, pharmacognosy. IUPAC का part ये रहा. अगर यहाँ पे देखते हो तो 5 different drugs है. हर एक ड्रग्स के अंदर कुछ कॉमन मॉइटी है, हर एक ड्रग्स का जो डिफरेंस था, वी हैव स्पोकन ओनली अबाउट दोज पर्टिकुलर मॉइटीज, एंड अल्टीमेटली हमको वही मॉइटी चाहिए, हमको सारी की सारी चीजें पढ़ने में कोई सेंस नहीं बनता. So let's be smart and focus on things which are actually going to make it easy for your GPAT NIPER preparation. Coming back to our chapter of asthma, where we were talking about salbutamol. So if you observe salbutamol on same lines over here, salbutamol के साथ आपको कुछ common चीजें दिख रही है. There is something which is common with salbutamol and all its drugs which are going to come further. कि जितने भी lols है ना, salbutamol for example in that particular case, salbutamol में specifically this moiety is going to be a part of every drug. Again, जो वीडियो मैंने अभी आपको दिखाया वहाँ पे मैंने बताया कि कैसे ड्रग के नाम से उसके स्ट्रक्चर का आइडिया मिलता है. डैप्सोन हो, सल्फाडायाजीन हो, मेबेंडाजोल हो,
ड्रग के नाम में ही उसके स्ट्रक्चर का बात होता है. Same way over here in salbutamol also you can get an idea about the structure from its name. ब्यूट है ना, मतलब कहीं तो ब्यूटाइल ग्रुप होगा. तो इफ यू ऑब्जर्व ओवर हियर, यहाँ पे थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है. तो दिस इज द कार्बन. ये कार्बन पे 3 कार्बन है, 1 मिथाइल ग्रुप. ये कार्बन पे दूसरा मिथाइल ग्रुप ये रहा, और ये कार्बन पे तीसरा मिथाइल ग्रुप ये रहा. तो वो एक कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप है. सो दैट थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप इज ओवर हियर. Salbutamol. This AM is for amino group. So here is the amino group. So butyl amino हो गया. All is basically standing for alcohol का all. So that all is right over here, alcohol का OH. Going further, इतना हो गया. Other than that, this is CH2OH. So this is hydroxy methyl. Hydroxy methyl. So here is the word hydroxy methyl. Going further, there is hydroxy ethyl. So this is hydroxy ethyl, CH2, CH2. And lastly, we have got phenol. तो ये फिनॉल ये रहा, बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप. क्लियर है. आईयूपीएसी इजी हो गया. पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी, कोई जीपार्ट में तुमको ड्रग का स्ट्रक्चर देख के उसका आईयूपीएसी लिखने नहीं बोलने वाला है. एंड इवन इफ यू आइडेंटिफाई 2 थ्रेड्स, आपको सिर्फ 2-3 एरियाज ढूंढने हैं वो ड्रग के स्ट्रक्चर के अंदर, जो वो ड्रग के साथ एकदम स्पेसिफिक हो और वो सिर्फ वही ड्रग में. वंस यू आइडेंटिफाई दैट, इट्स डन एंड डस्टेड. गोइंग फर्दर, व्हेन यू टॉक अबाउट साल्ब्यूटामॉल, साल्ब्यूटामॉल का दूसरा नाम क्या है, किसी को पता है क्या? साल्ब्यूटामॉल का दूसरा नाम है albuterol. I don't know how many of you are aware about this, but another name for salbutamol is albuterol. Very much important to be known. क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में साल्ब्यूटामॉल के बदले albuterol होगा, then we should know that salbutamol and albuterol is one and the same. If I don't know that, then we are gone, na? We have lost it altogether. We are not making sense in that particular case. Clear till you? Going further, after salbutamol or albuterol, the next thing which we need to talk about is I can give salbutamol via 2 ways. मैं उसको orally भी दे सकता हूँ, तो मैं आपको उसका टैबलेट दूंगा, एंड मैं आपको उसका एक इनहेलेशन प्रोडक्ट भी दे सकता हूँ. टेक योर टाइम, डोंट बी इन अ हरी, सोच के आंसर दो. ओरली ड्रग दूंगा तो ज्यादा बायोअवेलेबिलिटी मिलेगी, कि इनहेलेशन रूट से दूंगा तो ज्यादा बायोअवेलेबिलिटी मिलेगी? हाउ कैन आई एक्सपेक्ट अ बेटर बायोअवेलेबिलिटी, ओरली की इनहेलेशन? वन पर्सन सेज इनहेलेशन. हम सब ने पढ़ा होगा, whenever you take any drug orally, the drug is supposed to go through first pass metabolism. जब ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू जाता है, ड्रग का बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाता है, लिवर वो ड्रग को बाहर फेंक देता है. So if I'm going to give that drug via inhalation route, only in that case my therapeutic effect, my therapeutic response which will be obtained will be on the greater side. Am I clear? Am I clear till here? So it's very much clear that if I'm going to give my drug via inhalation route, only and only it's going to end up giving me a better therapeutic response. When you talk about salbutamol, most important thing, it's a highly selective beta 2 agonist. अगर वो selective beta 2 agonist है, तो जो हम लोग ने स्टार्टिंग में साइड इफेक्ट देखे थे कि भाई उसको हाइपरटेंसिव्स के साथ नहीं दे सकते या उसको दूसरे ड्रग्स के साथ नहीं दे सकते, डू यू थिंक दैट प्रॉब्लम इज गोइंग टू स्टिल स्टे इन, और इज इट काइंड ऑफ सॉर्टेड? वो प्रॉब्लम नहीं होगा. व्हाट इज योर कॉल ऑन दैट? प्रॉब्लम रहेगा कि नहीं रहेगा? ऑब्वियसली एडवर्स इफेक्ट्स कम हो जाएंगे ना, सिंपली बिकॉज इट्स अ सिलेक्टिव ड्रग जो सिर्फ बीटा 2 पे जाके काम करेगा. व्हेन वी स्पोक इनिशियली, तब वो बीटा 2 के साथ बीटा 1 पे भी काम कर रहा था. एम आई करेक्ट माय फ्रेंड? याद है पहले जो बात कर रहे थे सारे साइड इफेक्ट, वहां पे बीटा 2 और बीटा 1 पे भी काम कर रहा था, राइट? समीर, मुस्कान, तेजस, वैष्णवी, स्नेहल, तेजश्री, तेजीब, सिद्धेश. गोइंग फर्दर, व्हेन यू आर गोइंग टू गिव ड्रग वाया ओरल रूट, जब आप उसको टैबलेट से दोगे और जब आप उसको इनहेलेशन रूट से दोगे, where do you think the life of the drug will be for a longer duration? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा लंबा कहाँ पे मिलेगा? ओरल रूट से ड्रग ज्यादा टाइम सिस्टम में रहेगा कि इनहेलेशन रूट से ड्रग ज्यादा टाइम सिस्टम में रहेगा? वेर वेर परफेक्ट, गुड वन सोनाली, गुड वन निशी. So basically, when you give drug via oral route, it has to go through first pass metabolism and all. It will stay in the system for a longer time. So oral route will give you a longer duration of action, right? But if I compare it with inhalation route का सबसे बड़ा advantage है, moment you inhale it,
within 5 minutes it will start its therapeutic activity. So can I say inhalation has got a quicker onset? अभी पेशेंट को अस्थमा का अटैक आया है तो क्या आराम से रुकेगा कि भाई चलने दे, थोड़े टाइम बाद मैं ड्रग लूंगा, या तो मैं ड्रग लूंगा बट भले वो आधे घंटे बाद थेरापेटिक इफेक्ट दिखाए, चलेगा? चलेगा? डू यू थिंक दिस वुड वर्क? नो. You want the immediate onset of action when the patient is suffering from asthma attack. In all that cases, you go for a inhalation route जिसका onset of action immediate है, but इसका duration of action comparatively shorter है. ऑब्वियस है ना, इमीडिएटली अगर ऑनसेट दे रहा है मतलब वो ब्लड में इमीडिएटली जा रहा है, ब्लड में इमीडिएटली रहेगा तो ब्लड से एलिमिनेट भी जल्दी होएगा. इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वुड बी कंपैरेटिवली शॉर्टर. डू यू थिंक यू नीड टू बाय आउट दिस? नो. Onset is quicker, duration of action is shorter. Clear till here? Any doubt, any questions, any queries till here? Anything which you wish to ask? Lastly, with regards to salbutamol, there are a lot of side effects as well. Salbutamol खुद की अलग तकलीफें भी क्रिएट करता है. अब हमको सारे के सारे साइड इफेक्ट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बट देयर इज वन क्लासिकल साइड इफेक्ट व्हिच वी नीड टू रिमेंबर. दैट इज एंकल एडिमा. यू माइट हैव सीन अ लॉट ऑफ ब्लड प्रेशर पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम स्वेलिंग एट देयर एंगल. देखा है एंकल पे स्वेलिंग होती है उनको, स्पेशली जेरियाट्रिक पेशेंट्स. इट्स वेरी मच कॉमन विद देम. That is majorly due to salt water retention and multiple other factors. So what happens with salbutamol? Salbutamol के side effect में ankle edema का effect भी आता है. How this happens and all, it's not something which I need to explain or something which is required. But can anyone give me a guess? इसके side effect में ankle edema क्यों आता है? Why is it that a drug which is acting on beta 2 receptor on lungs is going to be responsible for causing ankle edema? क्यों हो सकता है? कुछ सोच के बता सकते हो? एडिमा कब होता है? जब सॉल्ट वाटर रिटेंशन होता है. सॉल्ट वाटर रिटेंशन कब होगा? जब जो डक्ट्स थे हमारे, तो रिमेंबर आपने यूरिनरी सिस्टम में एनाटॉमी पैथोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, साइट 1 साइट 2 साइट 3 साइट 4. कहीं से सोडियम बाहर जाता था, कहीं से सोडियम रिटेन होता था. अगर सोडियम रिटेंशन बढ़ गया तो सोडियम और वाटर डिपॉजिट्स होगा विच वुड अल्टीमेटली swelling. But when we talk about our beta 2 agonist drugs like salbutamol, has it got anything to do with all the ions, sodium ions, cations? क्या उसका किसी से कुछ लेना देना है? अगर लेना देना नहीं है, then how is it working in salt water retention? हिंदू आपको हिंट, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ. No one in GPAT is going to ask you this. This is only for your information and concept purpose. It has got something to do with a graph which you read in your anatomy, pathology, pathophysiology early days. डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन का कोई ग्राफ पढ़ा होगा आपने, करेक्ट? So it has got everything right in connection with that. Poonam, when you take salbutamol via inhalation route से लेने के बाद वो immediately blood में जाता है. ब्लड में इमीडिएटली जाता है, इसके लिए वो 5 मिनट में उसका थेरेपेटिक एक्टिविटी दिखाना चालू कर देता है. ब्रोंकोडाइलेशन इमीडिएटली होता है. एक बार वो ब्लड में इमीडिएटली गया तो ब्लड में से एक्सक्रीट भी जल्दी होगा, वो ब्लड से बाहर भी जल्दी जाएगा. तो इनहेलेशन रूट का ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक होता है, उसका थेरेपेटिक एक्टिविटी इमीडिएटली दिखता है, बट इनहेलेशन रूट का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज कंपैरेटिवली शॉर्टर, क्योंकि वो एक तरफ से आता है और थोड़े टाइम में इमीडिएटली चला जाता है. तो इनहेलेशन रूट का एडवांटेज है कि ऑनसेट इमीडिएट है बट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम है. ओरल रूट का ऑनसेट ऑफ एक्शन टेक्स टाइम बट इट्स कंपैरेटिवली अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. एवरीथिंग क्लियर टिल हियर? एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग व्हिच यू विश टू आस्क? क्या कुछ आप पूछना चाहते हो? Yes, no, yes, no. Anything in your minds? No? All right. So that was all about the first part. Inhalation can be emergency use. Most of the time, inhalation is a emergency use situation only, unless and until the patient is not responsive or there is something known as tolerance. Have you heard about tolerance? Muskan, the answer to that is right over in this graph. You can just go through that graph and you will get an idea. Have you got any idea about something which is known as tolerance? Tolerance क्या होता है public? Tolerance क्या होता है? What is tolerance? बताओ. Receptor saturation क्या होता है? चलो. So what happens is basically after a point, after a level, when you are taking a specific drug continuously again and again, the therapeutic application or the therapeutic effect of that drug decreases over a period of time. क्योंकि आपको पता होता है कि भाई चल रहा है, काम हो रहा है,
तो बॉडी स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग टू दैट ड्रग, वो सेम डोज पे उतना थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं देता है। लेट्स टेक सिंपल एग्जांपल ऑफ पैरासिटामोल। यू नो पैरासिटामोल, पहले हम सब बचपन में थे तो क्रोसिन खाते थे विच वाज 500 mg, राइट? 500 mg पैरासिटामोल एंड यूज्ड टू कॉल इट्स ब्रांड नेम क्रोसिन। आप मेडिकल वाले से क्रोसिन मांगते थे, पैरासिटामोल नहीं मांगते थे, राइट? ऑफ लेटली वो पैरासिटामोल का डोज बढ़ गया, अब हमको मिनिमम 650 mg का डोज लगता है, राइट? ऑल एडल्ट्स अबव 18 एज डोलो 650, the dose of the drug itself has increased. What led to that requirement of increase in the dose was basically tolerance, that वो सेम डोज पे अभी ड्रग पहले जैसा थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं दे रहा है इन ह्यूमन सिस्टम। एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? एनीथिंग व्हिच यू विश टू आस्क? नो? कैन वी प्रोसीड? So I said you know ankle edema has got nothing to do with your entrance. You can just check that graph. मिल जाएगा, ना मिले तो let me know. अभी भी तुम सोच सकते हो ऐसा कौन सा पार्ट है जो उसके कैटायन आनायन से रिलेटेड है जिसके वजह से रिटेंशन होता है, which basically leads to edema. Basically this is how we teach during lectures. We have everything going on in comparison: anatomy, pathology, pathophysiology with pharmacology and with medicinal chemistry, where you have got your structure activity relationship. Everything happens at a time, so it's 2 3 subjects going on at a time, but that's how you prepare for entrance. Wherever things are correlated, wherever drugs are correlated, all those things should go together rather than doing them in bits and parts. Every time after every lecture, in every lecture, whatever topic is being covered, whatever concepts are being covered, MCQs on that. Would you like to give a try to this MCQs which is right in front of you? Any tries for this particular MCQs which are right in front of you? Give it a go. Give it a go. Solve करके देखो क्या आंसर आ रहा है. Someone says C. C for which question? C for which question? C for which question? Just एक ही जन ने आंसर किया है. So you want me to question for you? Ipratropium bromide used in bronchial asthma is ipratropium bromide was a part of our TI as a short form, right? T for tiotropium, I for ipratropium, A for anticholinergic था. तो एंटीकोलिनर्जिक शुड बी द आंसर, राइट? टिक टैक वर्ड यूज किया था, टिक भी और टिया भी याद होगा तो वन का सी क्लियर हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग एक्टिंग सिम्पथोमाइमेटिक यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा? दिस माइट बी अ बिट डिफिकल्ट टू आंसर, वी हैव स्टिल नॉट गॉन टू दैट पर्टिकुलर लेवल, बट यस सेकंड का डी है. गुड वन, समवन आंसर्ड इट करेक्टली, गुड टू सी दैट पेजेस. ऐसे ही ओमालिजुमैब जो, ये भी तुमको थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा. चलो ये बता दो. फोर्थ वन शुड बी इजी टू आंसर. द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्रोंकियल अस्थमा. ये चार में से ऐसा कौन सा ड्रग है जो ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज नहीं हो सकता? वेरी ऑब्वियसली इट हैज टू बी प्रोप्रानोलोल. प्रोप्रानोलोल ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज नहीं होता है. व्हाई? प्रोप्रानोलोल एक्ट्स ऑन व्हिच रिसेप्टर माय फ्रेंड? प्रोप्रानोलोल एक्ट्स ऑन व्हिच रिसेप्टर? प्रोप्रानोलोल कौन से रिसेप्टर पे काम करता है? परफेक्ट, इट एक्ट्स ऑन बीटा 1. बीटा 1 रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन हार्ट. तो ये तो उल्टा प्रॉब्लम क्रिएट करके जाएगा, राइट? शाइनिया, श्वेता, निशी, तेजस, I hope we are very much clear. Snehal, Teji, that's how it actually works. And in Pharmaelite, we go on with 2 3 subjects parallelly at a time as we did now. It's a request that you all fill in the feedback form being pinned in the chat box so that next time there is a demo lecture, you all will be kept informed about the same. So this is how pharmacology, medchem, and anatomy, pathology, pathophysiology go hand in hand. Other than that, our lecture schedules, I think you might be already be aware about. Sunday, we go on from 10 a.m. to 1 p.m. Other than that, Saturday, our lecture go on from 7 to 8:30 p.m. Other than this Saturday and Sunday, we have lectures other 2 weekdays. And in those other 2 weekdays also, lectures are from 7 to 8:30 p.m. If you miss on to anything, the recordings are available on the application. Question papers are already uploaded on app. You don't need to wait for me to upload a question paper once we are done with the topic, or there is a topic of earlier days like amino acids, carbohydrates and all. आपका टॉपिक पढ़ के हो गया, क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी पोर्टल पे है. यू कैन गो ऑन वेबसाइट एंड यू कैन स्ट्रेट अवे सॉल्व द पेपर. You don't need my approval or you don't need any timetable from my side to solve a paper. आपका पढ़ के हो गया, you can straight away go on to the paper and you can straight away solve it. That's how easy it is, so that your practice should not stop based on what we are doing at our end. Notes are already uploaded on the app. Once you finish the lecture, notes भी app पे है.
रिकॉर्डिंग्स भी आप पे आ जाते हैं, क्वेश्चन पेपर्स ऐप और वेबसाइट पे है. सो एंटायर बंच इज अवेलेबल राइट ओवर देयर. For your information, our best rank in GPAT till date has been All India rank 08, and our best rank in NIPER till date has been All India rank 01. NIPER rank All India rank 01 was our best in 2020 general category in Pharma MBA. All India rank 8 was also in 2020. 2021, our best rank was 12 when it comes to NIPER. All our faculties are NIPERians only. Few of them are ICTians as well, but majorly we all are alumni of NIPER only. Our app, which is there on the Play Store, it is with the name of Pharmaelite GPAT Academy. You can just go on Play Store and just type Pharmaelite GPAT Academy. आपको app मिल जाएगा. You can download it and get going further on the same. Anything else? Any questions which you wish to ask? As I said, please fill in the feedback form so that next time there is a demo lecture, you will be notified further about the same. Any other questions in your mind? Anything else which you want to ask? कुछ और पूछना चाहते हो? How is the prep going? खुद के end से self study or how is everything going on upon? There is no end to that number of questions. Obviously, you can reach out to our team directly anytime you want. So numbers I have pinned in the chat box as well as it is there on the screen. With regards to question papers, there are two ways to do it when it comes to GPAT, NIPER, ICT, BITS, Manipal. One, you read everything which is there in the syllabus. एक बार आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो तो जो भी क्वेश्चन आ सकता है आप उसके लिए रेडी हो. एंड द अदर वे टू डू इज दैट यू सॉल्व एवरी पॉसिबल क्वेश्चन फ्रॉम द एंटायर सिलेबस. पूरे सिलेबस से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपने सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए. तो एज अ स्टूडेंट इफ यू डू बोथ, आपने हर एक पॉसिबल क्वेश्चन भी पढ़ लिया एंड आपने हर एक पॉसिबल syllabus का part भी पढ़ लिया. In that case, let it be any question which can come in your paper, you should be able to solve it. There should not be a problem with regards to any question on that particular ground. So basically, I personally feel that anywhere around 150 to 200 question papers, which is approximately considering kind of 125 questions on each paper, आप approximately बहुत ज़्यादा 18-20 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो. Our test series portal itself has 17,000 plus question papers and being added further upon. So for sure, when you practice so many number of questions, you probably touch upon every possible question in your paper. And one of the most important thing which I would like to highlight over here, don't underestimate yourself. जो 10th में 11th में या 12th में होके गया, नीट नहीं हुआ, फार्मेसी में जा बाई चॉइस नहीं आने मिला, बाई चांस आया, those all things are said and done. You and me, no one can change that. जो हो गया है वो हो गया है. Can just work upon what is yet to happen, what is in your hand to change around, and for sure things which you can alter at your ground. Obviously, Tejas, you can expect that, but more than that, you can expect questions from clusters, I would say, and full length test papers. They're a part of our test series zone altogether. So don't worry, stay safe, stay blessed, keep going. Don't do something which you don't like. Plan things, don't work on any chapter, any subject, or any topic blindly. हर एक चीज पढ़ने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है. And if you do it the way it is supposed to be done, trust me on this, you are not missing on to any of the topic or any of the chapter. You lose only when you are going haphazard. सिर्फ करने के लिए कर रहे हो, पढ़ कुछ रहे हो, एग्जाम में आता कुछ है, ऐसा कुछ मत करो. Whatever you are studying, it is supposed to go in a balanced manner. कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम में कब तक खत्म होगा, अगर आपको पता ना हो, जीपैट 21 तक आज तक जितने भी पेपर हुए जीपैट का 50% क्वेश्चन पेपर फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होता है. यस, 125 में से 60 to 65 क्वेश्चंस आर अप्रोक्सीमेटली ओनली रिवॉल्विंग अराउंड फार्माकोलॉजी एंड केमिस्ट्री. अगर आपने फार्माकोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों कर लिया, यू आर रेडी फॉर 50% ऑफ द पेपर. बट इफ यू आर ब्रेकिंग योर हेड अराउंड फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, क्लिनिकल फार्मेसी, यहाँ से दो दो तीन तीन क्वेश्चन आते, तुझे 125 में से सिर्फ 90-100 क्वेश्चन से टू क्रॉस 400 मार्क. So be smart with your subject preparation. Be clear with what is it which you are supposed to pick up for your preparation. That's where you are going to make a big change.
In case you want any help anytime, feel free to reach out to Pharmaelite. We will be more than happy to help you out. Premium revision batches are ongoing for GPAT 22 at a cost of triple nine. अगर कोई GPAT 22 का student है, get into it, and that's a lucky chance for you to get live lectures, notes, recordings, everything till GPAT 22. GPAT 23 and GPAT 24-25 students, there are discounts ongoing which are valid for the next 8 days. So if you are planning to join in Pharmaelite for live lectures, test series, or notes, feel free to reach out to us onto the given numbers. Thank you so much for your time. I hope Pharmaelite could add value to your time, especially on Sunday. And yes, for sure, we are here to make a difference and we will do it. Thank you so much. Thanks, everyone. Thanks, Muskan, Vaishnavi, Snehal, Tejas. Premium mock test is just another test. I'm talking about premium revision batch. If you want details about that, Tejas, just reach out to these two numbers. They'll help you out about the same. Lastly, छोटा मत सोचना. Moment you think small, you are destroying a big capability of yours. याद रखना, आदमी उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है. अगर तुम सोचोगे मैं सिर्फ जीपैट क्वालिफाई हो सकता हूँ, तो तुम सिर्फ क्वालिफाई ही हो सकते हो. अगर तुम सोचोगे मैं 400 लाऊंगा, तो तुम सिर्फ 400 ही लाओगे. अगर तुम सोचोगे मैं 500 लाओगा, तो तुम सिर्फ 500 ही लाओगे. 500 ही, वो 500 out of 500. It all starts with what you set as the end goal in your mind. So start with the end in mind and make it happen for yourself. See you on the other side, and I wish you for sure reach your dreams and you turn them into reality. Thank you so much, everyone. Most importantly, don't forget to fill the feedback form. Next time there is a demo lecture, we'll keep you posted on the numbers which you will be mentioning over here in the feedback form. So for the next demo lectures to get updates, please fill in this particular feedback form. Thanks, everyone.